Check. Hello. Check. Yeah. Yes, very good morning, my dear friends. Guys, good morning. Right, come on. So I'm sure your first day has been fantastic with all different subjects. सुबह से शाम तक लेके taxation, accounts, costing, then बीच में कुछ है law, exactly. चारों सब्जेक्ट मजा आ गया पूरा. Different classes, different buildings. बिल्डिंग तो एक ही है बट ऊपर नीचे करना है अलग अलग क्लासेस के लिए, या एक जगह है तो एक जगह पे वॉट एवर इट इज. सो आई एम श्योर योर फर्स्ट डे हैज बीन फैंटास्टिक. और आपको एक ही दिन में समझ में आए होंगे ना कि बहुत कुछ काम करना बाकी है अभी. समझ में आया या नहीं? या आपको लगता है कुछ करना ही नहीं है, हो जाएगा ऐसे ही बस? ऐसा कुछ है? मेहनत लगती है इसमें, और मेहनत का फल भी उतना ही ज़्यादा मीठा होता है. जितना मेहनत इसमें लगती है उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत का फल मीठा होता है. डोंट वरी अबाउट इट. सो डेफिनेटली वट एवर एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन विल गिव यू बेनिफिट्स tomorrow once you qualify. Correct, guys? Agree to that? Exactly. So without any delay, my dear friends, let's directly get into our subject of the income tax, what we discussed yesterday. And there are a lot of interesting points to discuss in the introduction topic, which we'll spend some good time today. Are we ready? Everybody, yaar, good morning. Come on, yaar, kya josh rehna chahiye sabke paas. Very good. Tell me, guys, did we discuss who is a person? Speak out. Yes, wonderful. How many pillars are there for democracy? What are the 5 pillars? Legislature, executive government, judiciary, press, comptroller and auditor general. These are basically the 5 pillars of democracy. Clear, my dear friends? ये एग्जाम में आएगा नहीं, बट एग्जाम में ये जरूर आएगा. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ? हाउ मेनी सोर्स आर देयर? हाँ, ये बहुत बार आएगा एग्जाम में. व्हाट आर द 5 सोर्सेस? Income Tax Act 1961, then Income Tax Rules 1962, then Annual Finance Act, then Circulars and Notification. What is the last one? Judicial Pronouncements. Income Tax Act, which year, my dear friends? Income Tax Act is 1961. Income Tax Rules is which year? इसका लॉजिक क्या है? Which we did not discuss in detail yesterday, but कल क्लास एंड तक आपको समझ में आऊंगा इसका लॉजिक क्या है. The logic is very clear that income earned in previous year is chargeable to tax in assessment year. ये चीज तो आपको समझ में आया ना कल सुबह? सर हम डिस्कस करें वेरी क्लियरली दैट जिस जो इनकम हम प्रीवियस ईयर में कमाएंगे उसका टैक्स और उसका रिटर्न फाइलिंग कब करेंगे हम? असेसमेंट ईयर में करेंगे. तो टेक्निकली जो 61, 62 में इनकम कमाए उसका टैक्स हम कब पे करने वाले हैं? 62, 63. क्लियर है बॉस? इसलिए इनकम टैक्स रूल स्टार्ट हुए 1962 में. दैट इज अ प्राइमरी लॉजिक व्हाई इट इज 1962, व्हाई नॉट इट इज 1961. गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी? सो फॉर 22, 23 व्हाट इज असेसमेंट ईयर? 23, 24. And we discussed that every financial year will act as what? Both PY as well as AY. What is PY? Previous year. Which section? Section 234 and section 3. I know कल आप लोग कॉर्पोरेट लॉ का भी सेक्शन सुने होंगे. सुने सेक्शन कुछ? हाँ ठीक है, सुने नहीं सुने कोई बात नहीं, बट आगे जाके तो सुनने वाले हैं. लॉ में भी सेक्शन सुनने वाले हैं, टैक्स में भी सेक्शन सुनने वाले हैं. टेंशन मत लो, कॉस्टिंग में कोई सेक्शन नहीं रहता है. कॉस्टिंग में कुछ सेक्शन है? हाँ जरूर सुनने को मिलेगा कि अलग अलग कॉस्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब यूनिवर्स दिखेगा आपको, वो तो गारंटी है, बट सेक्शन तो नहीं रहेगा उसमें कुछ. अग्रीड गाइस? बट ये टैक्स में तो सेक्शन जरूर होना ही है, बिकॉज इट्स अ लॉ. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉ, देयर इज अ सेक्शन, देयर इज ए सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन. जरूरी है क्या हर सेक्शन में सबसेक्शन हो? जरूरी है कि हर सबसेक्शन में क्लॉज हो? जरूरी है कि हर क्लॉज में सब क्लॉज हो? एंड इज इट मैंडेटरी द एक्सप्लेनेशन शुड बी देयर? नॉट मैंडेटरी एट ऑल. और क्लॉज में सबसेक्शन में फर्क समझ में आया ना सर? क्या है फर्क दोस्तों? बेटा बोलो. सबसेक्शंस आर इंटरकनेक्टेड, क्लॉजेस आर दोस व्हिच आर नॉट इंटरकनेक्टेड. पहले वाले क्लॉज में ये क्लॉज में कुछ लिंक होता नहीं है, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल. एग्जाम्पल
डेफिनेशन सेक्शन, डेफिनेशन 2:1 अलग है, 2:2 अलग है, 2:1 का 2:2 का कोई लिंक नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सबसेक्शन, अगर 23:1 23:2 बोलते हैं, 23:1 डील्स विद हाउस प्रॉपर्टी, 23:2 डील्स विद हाउस प्रॉपर्टी. दोनों का डेफिनेटली 100% देयर इज सम लिंक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आर वी गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट everybody? And income tax act is divided into what? Chapters. Chapters are divided into what? Sections. Friends, और आपके सिलेबस में पूरा का पूरा सेक्शंस नहीं है, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ते, थोड़ा टाइम लगेगा बट विल डेफिनेटली डू इट. क्लियर एवरीबॉडी? यस. असेसमेंट ईयर कौन सा सेक्शन है? एक्सीलेंट. सेक्शन 2(9). अरे याद करो यार, ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई बात नहीं. Section 2(9) is what? Assessment year. And they clearly told in the law that previous year is the year in which, previous year what? Previous year is the year in which income is earned. Previous year is the year in which income is earned. Whereas assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. एग्जाम में जाके ये मत लिखो assessment year is the year in which tax is paid. ये पूरा का पूरा गलत बात है दोस्तों. I'll tell the reason why. Because very soon we are going to learn one concept called advance tax. नाम क्या है बेटा? नाम ही बोलता है एडवांस टैक्स. तो अब टैक्स पे करो, टैक्स पे करो एडवांस में. तो बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं उसका एडवांस में प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करते, विच विल लर्न इन डिटेल. किसको एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल हो, सब जब टाइम आएगा वक्त के साथ साथ विल गेट इनटू दैट डिटेल्स. डोंट वरी. But my point which I want to tell you is that don't write in the exam assessment year is the year in which tax is paid. ये पूरा का पूरा गलत बात है. What is assessment year? Assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. Proper लिखो एग्जाम में, प्रॉपर मार्क्स आएगा. और अब कुछ भी लिखेंगे कुछ भी मार्क्स आएगा बोल तो नहीं आएगा. सीए के बच्चे यार, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हम जो भी बात करते हैं उसका कुछ वैल्यू है. करेक्ट? कम ऑन. असेसमेंट ईयर इज द year in which previous year income is chargeable to tax. Previous year is the year in which income is earned. Assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. Clear friends? So when I say previous year 21-22, what is assessment year? 22-23. When I say previous year 22-23, assessment year 23-24. आपके एग्जाम के लिए क्या एप्लीकेबल है? प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24. उसके पीछे लॉजिक क्या है? द ईयर इन विच यू राइट एग्जाम, दैट ईयर्स फाइनेंस एक्ट विल नॉट अप्लाई फॉर योर एग्जाम. Since you are writing exam in 2023, 23 Finance Act will not apply to you. If 23 Finance Act does not apply to you, which Finance Act will apply? 22 will apply. And Finance Act 22 gives tax rates for 22-23 previous year. Which is assessment year? 23-24. समझ में आ रहा है सर लॉजिक? सर स्पीक आउट फ्रेंड्स. अगर कोई भी दोस्त आपको एग्जाम में बोलता है कि फाइनेंस एक्ट 23 आ गया और ये पूरा चेंजेस आ गया, हमको ये भी पढ़ना है, उनको बोलना भैया नमस्ते, हम उससे पहले पास हो जाएंगे, बाद में पढ़ लेंगे. समझ में आ रहा है ना सर? अगर आप बोल रहे हैं हम वो भी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप अटेम्प्ट पास नहीं हो रहे, उसका मतलब उतना ही मतलब होता है. बराबर ना यार? जो 23 फाइनेंस एक्ट आता है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? जो 24 में एग्जाम लिखते हैं. पर हम 23 में पास होने वाले हैं ना सर? अरे हो जाएंगे ना यार सर, कॉन्फिडेंस रखो यार, डेफिनेटली हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं, आप जब फाउंडेशन पास करें थोड़ी ना सोचे होंगे फाउंडेशन पास हो जाएंगे. सब बोल रहे सर सोचे थे सर हो जाएंगे, अभी भी सोचना यार ये भी हो जाएगा ऑटोमेटिक. ऐसे क्या होगा? ऐसे कुछ नहीं. देयर इज नथिंग कॉल्ड डिफिकल्टी इन लाइफ. आई मीन पर्सनली लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. शिव तेजा बिलीव्स समथिंग अ लॉट. I don't believe something called easy and difficult. मैंने आज तक जिंदगी में कभी सोचा नहीं कि ये easy है ये difficult है. Even when I teach CA final students or when I do correction activity, when I sit in practice, whatever activity I do, मैं कभी दिमाग में ये लेके नहीं आऊंगा कि ये easy है difficult है. I think only two things, known and unknown. If you know it, it's automatically easy. If you don't know it, it's automatically difficult. आपको contract tag difficult है क्या अभी? हाँ, क्यों ऐसा? हाँ, पढ़ लिया और पास भी हो गए, जो भी नंबर आया 201 या 205 जो भी है, पास तो हो गए ना यार. सब पास तो हो गए ना यार डेफिनेटली. तो फर्क पड़ता है ना यार बहुत कुछ. बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड कॉर्पोरेट लॉ, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 27, 29. अरे यार 27 बोल रहे हैं आप, 29 बोले, बीच का 28 नहीं बोले आप, वो भी मैं बोल दूंगा आज, टेंशन मत लो. सर क्लियर माय डियर फ्रेंड्स?
सो ऑटोमेटिकली कुछ नया चीज सब चुनते हैं ना सर, वी विल बी स्लाइटली रेसिस्टेंट कि कुछ नया ले रहा है, दिमाग कुछ नया ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली इट टेक्स सम टाइम फॉर द ब्रेन टू एक्सेप्ट इट, बट ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट लविंग इट यू विल ऑटोमेटिकली एंजॉय इट. क्लियर फ्रेंड्स? सर एग्री टू दैट? सी सिंपल से लॉजिक है यार. सी सिंस आई कम ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद टू पुणे, व्हेन आई केम टू द पुणे, आई मीन पुणे तो मेरे लिए तो बिल्कुल नया नहीं है, बट इन 2015 फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू पुणे, हम लोग को लंच का आदत है, बिना राइस का लंच खत्म होता नहीं है, बट यहाँ पे आते तो भैया रोटी खिला रहे जा रहे, खिलाए जा रहे, खिलाए जा रहे, भैया चावल लेके आए भैया प्लीज. तो ऑटोमेटिक वो टाइम लगता है वो, बिकॉज द माइंड सेट इज लाइक दैट. करेक्ट? नो. और अभी बंदा चावल लेके आए तो बोलता भैया बाद में देख लेंगे, इतना सा खाएंगे, पूरा रोटी देना पहले. व्हाई इज दैट माइंड सेट चेंज्ड? यूज्ड टू हो गए, अडेप्ट हो गए सिचुएशन के लिए. वंस वी अडेप्ट टू इट वी विल ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट इट. In the same way, once you start loving this subject, you will automatically enjoy the subject because ये बहुत beautiful subject है. Because आपके साथ practically भी चलने वाले हैं, उसके साथ साथ एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और फाइनल के लिए पता है आपको ऑलरेडी DT 100 मार्क, IDT 100 मार्क. तब तो 60 और 40 का कोई कहानी ही नहीं है, सीधा 100 स्ट्रेट सेंचुरी मारना है. क्लियर फ्रेंड्स? सो जस्ट स्टार्ट लविंग दिस सब्जेक्ट यार. डेफिनेटली आपको फाइनल में भी काम आएगा. प्रैक्टिकल चीजें, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा 100%. द रीजन बिकॉज मैं खुद प्रैक्टिस में हूं, मैं खुद इन एंड आउट रोज यही काम करता हूं, तो ऑब्वियसली आपको बता ही जाऊंगा, नो डाउट अबाउट इट. और आज आप लोग कैलकुलेटर लेके आपके साथ काम कर रहे हैं. और मैं आपको आज पहले दिन ही बता दूं एक चीज, वेन एवर आई गिव ए क्वेश्चन एंड यू सॉल्व सम आंसर, वेदर यू आर यूजिंग सिटीजन कैलकुलेटर, कैशियो कैलकुलेटर, एनी कंपनी कैलकुलेटर, आंसर जरूर सेम आएगा. अगर गलत है मतलब अपन कुछ गलत किया. कैलकुलेटर गलत नहीं कर सकता है बेटा. बराबर सर? एग्जैक्टली. सो विच सेक्शन डिफाइंस प्रीवियस ईयर? सेक्शन 234 and section 3, which says previous year is the year in which income is earned. Assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. बोलो बेटा वापस लास्ट टाइम. previous year income is chargeable to tax. यहां तक सब क्लियर है? क्लियर? राइट. ये पर्सन का डेफिनेशन हमने देख लिया सर. कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है पर्सन का डेफिनेशन? सेक्शन 231 and it starts with the word person. Includes, come on, who all are covered in that? Individual, HUF, company, firm, LLP, AOP, BOI, AJP. AOP का मतलब association of persons, first class. BOI का मतलब body of individual. What is AJP? Artificial judicial person. Whether you call judicial or you call juridical, meaning is one and the same. Don't worry. Clear? BOI का full form? Body of individual. AOP का full form? Association of persons. Clear? AJP का full form? Exactly. AJP का full form बोलो बच्चों. कोई एग्जाम्पल बोलो. ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, ये सब आते हैं उसमें. और लास्ट एक चीज लिखा था आपको मैंने, लोकल अथॉरिटी. इसका एग्जाम्पल, एनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल कम अंडर लोकल अथॉरिटी. सो गेटिंग क्लैरिटी एवरीवन? स्पीक आउट. राइट. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, yesterday I also told you something interesting word about something called SSC. याद है दोस्तों? हम लास्ट में बात कर रहे थे इसके बारे में, SSC सेक्शन 2(7). सर अरे बोलो यार, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. एंड वी डिस्कस वेरी क्लियरली दैट SSC मीन्स पर्सन. एवरी SSC इज ए पर्सन, बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन SSC. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? एवरी SSC इज ए पर्सन, बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन SSC. ये बात करें हम लोग सर. और मैं जब पूछा था यहाँ पे किस किस के पास पैन कार्ड है, बहुत सारे लोग पैन उठाए. lot of people raise their hand saying that, हाथ उठाए saying that we have got PAN with them. Correct? Now let me tell you very clearly, आपके पैन कार्ड चेक कर लो, डेफिनेटली 4th लेटर P ही रहेगा. थोड़े लोग सोच रहे हैं हाँ सर P है. करेक्ट. आपको कैसे पता है? इसके पीछे एक लॉजिक है, दैट एवरी पैन 4th लेटर रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ पर्सन. For individual it will be P, for company it will be C, for HUF it will be H, for partnership it will be F. You're getting my point? 4th letter represents the type of person. 5th letter represents surname first letter.
चेक कर लो आपका सरनेम क्या है, उसका फर्स्ट लेटर क्या, चेक कर लो, फिफ्थ लेटर वही रहेगा. यस यस, करेक्ट, करेक्ट है. चेक कर लिया आप लोग, याद आ गया आपको पैन? बच्चे बोल रहे हैं सर हमको पैन नंबर ही याद है. पैन नंबर ही याद नहीं हमको, पापा ने बोल दिया अप्लाई करो, अप्लाई कर दिए बस. बट समझ में आया लॉजिक क्या है इसका? स्पीक आउट गाइस. इज पैन एन इंपॉर्टेंट थिंग? विदाउट हैविंग ए पैन कैन ए पर्सन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न? Not possible, because PAN is the basic document, PAN is the basic number which has been given by the income tax department as an identification number. दोस्त देख लिया, फोर्थ लेटर पी है, फिफ्थ लेटर आपका सरनेम, फर्स्ट लेटर है, खुश हो गए बस. ये बंदा बोल रहा है आज कुछ सीखने को मिला है नया, चलो डन. पापा को फोन करके बोलते पापा आपका फोर्थ लेटर पी है ना, फिफ्थ लेटर यही है ना. पापा बोलेंगे क्या बेटा क्या कर रहा है तू? सर क्लियर है सबको, आई बात समझ में? Everybody getting clarity? Because there are practical things which you should know, the basic things what you have to understand. Basic चीजें, फाइनल में कुछ एडवांस लेवल सीखते हैं, बट बेसिक चीजें तो डेफिनेटली मालूम पड़ना चाहिए. आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? एंड पैन हाउ मेनी डिजिट है दोस्तों? कल कोई दोस्त 12 बोले थे. हाँ 10. 10 डिजिट व्हाट? इट इज अ 10 डिजिट डेफिनेटली एन अल्फा न्यूमेरिक कोड. फोर्थ लेटर रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ पर्सन. अब आप मुझे ये मत पूछो सर इंडिविजुअल को आई देना चाहिए ना, उन्होंने पी फिक्स कर दिया, क्या कर सकते हैं अभी? ठीक है ना यार, कम ऑन. फोर्थ रिप्रेजेंट टाइप ऑफ पर्सन, फिफ्थ लेटर रिप्रेजेंट्स सर नेम का फर्स्ट लेटर. आर वी गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट एवरीबॉडी? सबको समझ में आ रहा है सर? सो इज एवरी एसएससी ए पर्सन? इज एवरी एसएससी ए पर्सन? बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन. जरूरी नहीं है कि हर बंदा टैक्स पे करे, और जो हर बंदा जो टैक्स पे कर रहा है वो पक्का कोई ना कोई पर्सन तो है ही. सर करेक्ट यार? एवरीबॉडी इधर तक क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा सर, सोच के जवाब देना, फिर हम लिखना चालू कर देंगे. बोलो, ये सुने नाम, क्या नाम है? जम्मू एंड कश्मीर. कहाँ पे? मैं सबसे पूछ रहा कहाँ पे है. आधे लोग तो कुछ बोल रहे नहीं, सीधा बोल रहे सर. चलो चलो चलो, कहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सर? नॉर्थ, टॉप मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. Does income tax apply to Jammu and Kashmir? Does income tax apply to Maharashtra? Does it apply to Telangana? Does it apply to Jammu and Kashmir? Does it apply to Gujarat, Rajasthan? ओके ठीक है यार, मैं लैंड में काम ही नहीं कर रहा हूं. लैंड पे मैं जाके इंडियन ओशन में कुछ काम कर रहा हूं. आई एम नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी ऑन द लैंड, आई एम डूइंग सम एक्टिविटी इन वाटर, ओशन. इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, कहीं ना कहीं मुझे, मैं काम कर रहा हूं. आई एम डूइंग एक्टिविटी इन वाटर, आई एम डूइंग एक्टिविटी इन वाटर. शुड आई पे इनकम टैक्स? बोलो यार. अच्छा ठीक है. पानी के अंदर कुछ काम कर रहा हूं. अब ये मत पूछो सर पानी के अंदर क्या काम कर सकते हैं आदमी? पानी के अंदर कुछ भी कर सकता है. स्कूबा डाइविंग कर रहा है वो. मैं लोगों को स्कूबा डाइविंग कैसे करना सिखा रहा हूं उसको, और उससे पैसे कमा रहा हूं. अरे आप डाउट मत पूछो यार, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं. आदमी कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है यार. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. सो पानी के अंदर कुछ कर रहा है, उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा. बोलो यार. अच्छा, तो लैंड पे करेंगे तो टैक्स भरना है, पानी के ऊपर करेंगे तो भी टैक्स भरना है, पानी के अंदर करेंगे तो टैक्स भरना है. अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा. वो हवा में कुछ काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल चाहिए? हाँ, एयरलाइन कंपनी. एग्जैक्टली, वो हवा में कुछ काम कर रहे हैं. बोलो यार, अभी उसको टैक्स भरना पड़ेगा. स्पीक आउट यार. एक्सीलेंट. This income tax act applies to whole of India. Income tax applies to what, sir? Whole of India. And this word India is defined by one section called 225A. Which section defines India? 225A, which clearly says India includes, देखो ध्यान से देखो, India includes territory. Territory मतलब land. Simple. Land mass is called territory. India includes territory. Territorial waters. This territorial waters is interesting point, my dear friends. This territorial waters is up to 12 nautical miles. Up to how many nautical miles? Up to 12 nautical miles. We call it as territorial waters. Now, what is nautical mile? जरा मुझे एक बात बोलो. अब आज तक आप कोई दुकान में जाके बोले क्या भैया 2 kg दूध देना, पूछे कैसा? क्या पूछते? हाँ, 2 लीटर दूध.
कभी जाके बोले क्या 2 लीटर शुगर देना, क्या बोलते, क्यों ऐसा? Exactly, for every product there is something called unit of measure. For every product there is a unit of measure. This will measure by a bottle, units, pieces. Sir, tablets को कैसे measure करते हैं हम? Strips. In the same way, distance on the road is measured in meters and kilometers, but distance in water is measured by nautical miles. What do we call it? Nautical miles. क्या बोलते हैं दोस्तों? Nautical mile. और मुझे मैं आपको ये चीज बता दूं that 1 nautical mile is equal to 1.853 kilometer. 1 nautical mile is 1.853 kilometers. Getting clarity, everybody? All of us? Come on, which section we're talking about? Section 225A. Come on, section 225A defines what, sir? 225 defines what is India. India includes what? Territory. Then territorial waters, continental shelf, and इसका नाम बोलते हैं exclusive economic zone. Continental shelf and what, sir? Exclusive economic zone. Friends, I repeat again. What is the language I wrote? Come on. Continental shelf and exclusive economic zone. This is up to 200 nautical miles. और इसका एक लॉजिक है that why they have specified this word as exclusive economic zone. So name only says exclusive economic zone, and let me tell you, there exclusively only one activity is covered: extraction of mineral oil. Extraction of what oil? So आपको ये समझना है 12 किलोमीटर तक, I mean 12 nautical mile तक आप कोई भी एक्टिविटी करो, सब कुछ कवर्ड है. Correct, my dear friends? But when we talk about exclusive economic zone, only what activity is covered? Extraction of mineral oil. Sir, उसके लिए उसको नाम आया exclusive economic zone. Getting clarity, everybody? So speak out. Come on, definition is not done. Which section we're talking about? Section 225A. India includes territory, territorial waters, continental shelf, and exclusive economic zone. Clear? Next one. Seabed and subsoil underlying such waters. Come on, what is that line, my dear friends? Seabed and what? Subsoil underlying such water. That means what? Pani ke andar. Pani ke andar also there is a land, no? So when we go inside the water, the more deeper we go, definitely we find some surface. So speak out. That is called subsoil underlying such water. Getting clarity, everybody? Finally, last point. That is airspace above territory and territorial waters. So please observe what airspace is covered, sir? What airspace is covered? Airspace above territory and territorial waters. Did they cover? अब मुझे बोलो, आप कुछ समझ के बोलो. Did they cover airspace above exclusive economic zone? अरे बेटा बोलो बेटा, देखो कुछ डेफिनेशन देख के क्लियरली बोलो मुझे. Did they cover airspace above exclusive economic zone? अरे बोलो यार. No. लॉजिक क्या है उसका? Only extraction of mineral oil is done. जो करते हैं हम under the sea, not from air. लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक्सक्लूसिवली क्या एक्टिविटी कवर्ड है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल. हम हवा से करते क्या वो? We dig it and then extract the mineral oil, right? So when we are digging it and not doing from airspace, they have not covered airspace from exclusive economic zone. So getting clarity here? Now my dear friends, if you look at the India structure, assume कर लो, drawing में बहुत खराब है, इसके लिए तो कॉमर्स में आए, देख लो. So from this is called baseline. What do we call it, sir? Baseline is the line where land is done, water begins. Baseline is a line where land is done, water begins. From baseline up to 12 nautical miles.
क्या बोलेंगे बेटा इसको? टेरिटोरियल वाटर्स फ्रॉम बेस लाइन up to 200 nautical miles, we call it as what? Continental shelf or exclusive economic zone. And I clearly told you that exclusively only one activity is covered there. That is what? Extraction of mineral oil. Since that is not done from the airspace, that is not covered there. Getting clarity, everybody? Come on, guys. Bolo beta. It has income tax applied to Jammu and Kashmir. Speak out. Exactly. It has income tax applied to Rajasthan, Karnataka, Maharashtra. वाटर, इनसाइड वाटर, एयर. बट आप एग्जाम में जाके लिखेंगे इनकम टैक्स अप्लाइज टू लैंड, वाटर, एयर. जीरो मार्क्स आएगा. स्ट्रेट अवे जीरो. बिकॉज द वर्ड शुड नॉट बी लैंड, वाटर, एयर. व्हाट शुड बी द वर्ड? टेरिटरी, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, exclusive economic zone, seabed and subsoil underlying such water. Last one. Airspace about territory and territorial waters. एक बार फिर ट्राई करते. देखो मत उधर, ट्राई करेंगे यार. कम ऑन. इंडिया कवर्स व्हाट? टेरिटरी, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ and exclusive economic zone, seabed and subsoil underlying such water. Airspace about territory and territorial waters. Getting clarity, everybody? One last time. Come on. India covers what? Territory, territorial waters, continental shelf and exclusive economic zone, seabed and subsoil underlying such water. And finally, airspace about territory and territorial waters. So which section defines India? 225A. What is section 27? Assassi. 29. 234. Section 3. दोनों में previous year का बात करते हैं. Previous year is the year in which income is earned. Income is earned. Assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. बराबर है यार? 2 मिनट इंडिया से बाहर आ गए ना. अब वापस बोलो इंडिया का डेफिनेशन क्या है? टेरिटरी, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, seabed and subsoil underlying such water, and airspace about territory and territorial waters. अरे यार पार्टिसिपेट करो यार, बोलो आंसर. कुछ नहीं होता है, ज्यादा बोलने से कुछ भी नहीं होता है. भगवान ने इतना मस्त आवाज दिया, सबको बोल सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं. बिंदास बोलो यार, आंसर बोलो यार. बैठो मत ऐसे आराम से. आप आराम से बैठेंगे तो 2 मिनट के बाद नींद आ जाएगा. सिंपल. तो पूरा दिन मेहनत करें आप लोग, तो पूरा दिन मेहनत करें और करने वाले तो बहुत कुछ पिक्चर बाकी है. तो automatically you have to concentrate, you have to focus. Come on. Which section defines India? 225. How do you pronounce that 225A? Section 2. Sharp हो गया यार अभी आप लोग. Section 2 clause 25A. अरे यार आप section 2 clause 25 सब clause है मत बोलो. 25A पूरा एक ही ब्रैकेट में. आप चेक कर लो पूरा एक बार. See, if I write like 225A, ये अलग हो गया. When I write 225A, what does that mean? Section 2 clause 25A. अगर आप 2 लिखेंगे फिर 25 लिखेंगे फिर A लिखेंगे तो खत्म. This is section 2 clause 25A. If I write 2 bracket 25, one more bracket A, what does that mean? Section 2 clause 25 subclause A. Yes. समझ में आ रहा है लॉजिक इसका? अगर ये डेफिनेशन सेक्शन होता तो क्या होता था? Section 2 subsection 25A. But this is not subsection because it's a definition sections. Definitions will never have subsection. It will always have a clause because there is no interconnection between one clause to another clause. Getting clarity? Everybody? चलो बेटा चालू करो लिखना. Come on. Income tax. Income Tax Act. हो गया क्या? नहीं आ रहा यहां से. चलो लिखो क्या लिखे. इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू. इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया
कोल का स्पेलिंग क्या है बेटा? हाँ प्लीज कुछ भी मत लिखो यार, मीनिंग गड़बड़ हो जाता है। कल बताया ना आपको प्रिया रिया में कितना फर्क है, एक लेटर का फर्क नहीं है, वो पूरा मीनिंग आउट, सब खत्म। क्या लिखे आप? इनकम टैक्स अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सर स्पेसिफिकली हम लोग जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं बिकॉज सम एक्ट्स डोंट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, दैट्स व्हाई वी स्पेसिफिकली टेल ऑलवेज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? या इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। चलो नीचे लिखते हैं, एज पर सेक्शन 225A, as per section 225A, पता है ना कैसे लिखना है 225A? as per section 225A, comma, India covers territory, India covers territory, comma, territorial waters, India covers territorial waters, comma, continental shelf, and exclusive economic zone, continental shelf and exclusive economic zone, continental shelf and exclusive economic zone, comma, seabed and subsoil, seabed and what sir? Subsoil underlying such waters, seabed and subsoil underlying such waters. Seabed and subsoil underlying such water. Come on, last one. What is that? Airspace about territory. Airspace about territory and territorial waters. Airspace about territory and territorial waters. That's it. नीचे एक नोट लिखेंगे, उसका मीनिंग क्या है, वो टेरिटोरियल वाटर मीनिंग लिखेंगे ना उसके नीचे नोट। टेरिटोरियल वाटर्स इज अप टू, टेरिटोरियल वाटर्स इज अप टू क्या दोस्तों? 12 nautical miles. Territorial waters is up to 12 nautical miles. क्लियर है? ब्रैकेट में लिखना 1 nautical mile is equal to 1 nautical mile is equal to 1 nautical mile is equal to 1.853 kilometers. एनएम लिख सकते हैं, मार्क्स आ जाएगा। एग्जाम में एनएम लिखो, मार्क्स आ जाएगा, कोई बात नहीं। 1.853 व्हाट सर? 1 nautical mile is 1.853 किलोमीटर्स। हो गया ना? डन। नेक्स्ट और एक नोट पे लिख देना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, exclusive economic zone, exclusive economic zone, exclusive economic zone is up to, exclusive economic zone is up to 200 nautical miles. Exclusive economic zone is up to 200 nautical miles. So clear? Done? Everybody? That's it. Come on. Income Tax Act which year? 1961. Income tax rules. What is the third source for income tax? Annual Finance Act. How will Finance Act come into picture? First budget is presented by the Finance Minister in the House of Parliament. On which day? First day of February. And the budget is approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. Then it becomes Finance Bill. Bill is signed by President. Then bill becomes Finance Act. ये तो पता है ना अपने को?
क्लियर होना चाहिए ये चीज. या फोर्थ वन, circulars and notification. Generally they are given by CBDT. Circulars are more of clarificatory in nature. Notification कुछ नया चीज नोटिफाई करना है तो उनको नोटिफिकेशन यूज करते हैं. लास्ट वन क्या है दोस्तों? Judicial pronouncement. They are rulings given by High Court and Supreme Court. Technically we call them as case laws. Case laws. Case laws are something like set principle. For example sir, for example, मेरा कुछ इनकम टैक्स का इशू है. That issue went up to Maharashtra High Court. Maharashtra High Court gave that ruling. आपका भी सेम इशू है तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट क्या फॉलो करेगा? जो रूलिंग शिवा तेजा के केस में दिए वो रूलिंग आपको भी एप्लीकेबल है. स्पीक आउट. बट इफ आई एम नॉट इन महाराष्ट्र बट आई एम इन गुजरात, इज इट मैंडेटरी दैट गुजरात ऑफिसर विल फॉलो महाराष्ट्र केस लॉ? पक्का? स्पीक आउट. Already told you this point. Ruling of High Court is definitely applicable in that particular state, but the ruling of will apply for entire India because Supreme Court is also called as apex court. We also called as apex courts. So getting clarity everybody? All of us clear with this concept everyone? यहाँ तक बात समझ में आए ना वापस? Yeah? Section 3 previous year 27 29 assessment year 225A India. अरे अब भी देखने यार. 231 person. Friends, is every person an SSC? बोलो, is every SSC a person? Definitely answer is yes. उसके पीछे लॉजिक क्या हमको पता है. Are we clear with this point everybody? Now listen to some important concepts which we'll talk in detail. कुछ भी लिखना मत 5 मिनट, just सिर्फ बिंदास सुन लेना. How the income tax framework work और आपके सिलेबस में है क्या वो सब समझते हैं अभी दिन. Clear my dear friends? So now let's understand what exactly is income tax all about. What is actually there in your syllabus? Let's understand in detail. Are we ready, sir? Right. Sir, I'll ask you one question. Think properly and tell me. Then I'll start writing. Okay? Do you guys know somebody called Chris Gill? पता है Chris Gill? हाँ, अब मुझे बोलो, Chris Gill belongs to which country? हाँ? West Indies. Now I have a question. If Chris Gill is coming to India, doing something in India, making money in India, do you think Indian government will ask him to pay income tax? बोलो. आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? फिर से पूछूंगा सर. Think properly and tell me the answer. A West Indies player is coming to India, doing some activity in India. अब आप पूछेंगे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में एक्ट कर रहे हैं. उला ला ला ले वो. अब बोलो. He has acted in advertisement and he made money in India. He made money in India. Should he pay tax in India? बोलो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शिवा तेजा. बट बात करेंगे 1 मिनट. शिवा तेजा, an Indian person. I went to London. Where is London? UK. I went to UK, done some activity in UK, earned income in UK. Should I pay tax in UK? रिवर्स पूछा ना मैंने अभी. पहला क्वेश्चन क्या था? वेस्ट इंडीज का बंदा इंडिया में आया है, इंडिया में कुछ काम कर रहा है. बहुत सारे लोग बताए यहाँ पे सर इंडिया में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया से पैसे कमाए. हाँ हाँ हाँ. अब मेरा क्वेश्चन क्या है? इंडिया का बंदा कहाँ जा रहा है? यूके. और यूके में कुछ काम करके यूके में पैसे कमाए. यूके में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं? तो वेस्ट इंडीज का भी आपका आंसर नो होना चाहिए ना. तब क्यों यस बोले थे आप? हु डोंट हैव पैन कार्ड हियर? अच्छा, आपके हिसाब से वेस्ट इंडीज वाला बंदा इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. पैन कार्ड नहीं है तो अप्लाई करो. ऐसे थोड़ी होता है. सीए इंटर एग्जाम लिखना तो रजिस्टर तो करना पड़ेगा ना. वैसे टैक्स भरना है तो पैन कार्ड लेना पड़ेगा ना. हमने मना किया आपको पैन कार्ड लेने से? अरे यार ये तो कुछ नया चीजें बोल रहे मैडम. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को पैन कार्ड मिलता है. एनी फॉरेनर, एनी फॉरेन सिटीजन कैन हैप्पीली टेक पैन कार्ड इन इंडिया. फॉरेन सिटीजन कैन नॉट टेक वोटर आईडी इन इंडिया, बट फॉरेन सिटीजन कैन हैप्पीली टेक पैन कार्ड इन इंडिया. पैन कार्ड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. गवर्नमेंट उल्टा खुश होता है. आजा बेटा, आजा बेटा, आजा 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 आजा. गवर्नमेंट इतना खुश क्यों हो रहा है? आया ना एक बकरा टैक्स भरने के लिए. आजा बेटा टैक्स भर. जितना टैक्स तू भरेगा उतना अच्छा है हमारे लिए. आ जाओ.
तो पैन कार्ड का लॉजिक नहीं है, आप कुछ और लॉजिक बोलो मैं मान लूंगा, वो लॉजिक तो नहीं है। और किसी के पास आंसर है कुछ? बोलो। वेस्ट इंडीज का बंदा इंडिया में आके कुछ काम कर रहा है, वो इंडिया में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं? मैडम चीटिंग। मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कल भी आपको एक छोटा सा ऊपर ऊपर बताया था, पर अभी डिटेल में आज बताऊंगा, सुनो ध्यान से। सी पॉइंट इतना सा बात है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 1, आवर क्वेश्चन इज वेदर ही शुड पे और ही शुड नॉट पे। इफ ही हैज टू पे, if he has to pay, if he is not paying, one fine day he'll be caught, और जिस दिन पकड़ा गया पूरा गाना बचेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। once you are caught, you'll be caught with tax, interest, penalty, सब कुछ लगेगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। once he is caught, then your tax, interest, penalty, everything will come into picture. And let me honestly tell you that in Pune there is a vada pav center which I told you that yesterday that one person was caught. ऑफिसर ने क्या किया पता है? ऑफिसर ने एक बार उसको वड़ा पाव खाने गया था वहां पे, और उसको लगा यार मैं जब तक एक वड़ा पाव खा लिया, वो बंदा तो 200-300 वड़ा पाव बेच चुका है, ये क्या हो रहा है, मतलब ये बंदा तो कुछ नेक्स्ट लेवल बिजनेस कर रहा है। इसको डाउट आया और ये बंदा जाके उसका इनकम टैक्स रिटर्न चेक कर लिया, देखे तो इनकम है 2 लाख 3 लाख रुपए साल का, और दिख रहा है रोज 1000 वड़ा पाव बेच रहा है ये। यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? देन ऑफिसर गॉट इट आउट दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। देन ही थॉट वन फाइन डे let's do an income tax raid, and these people have done income tax raid in the evening at 7 p.m. evening at 7 p.m. जब 7 बजे जाके उन्होंने इनकम टैक्स रेड किया, वहां पे उनको कुछ भी कैश नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ तो बेसिस होना चाहिए ना कैलकुलेट करने के लिए टैक्स, पर उनको कुछ मिला ही नहीं। ऑफिसर ने क्या किया पता है? उसने उसका डस्टबिन खोला और कैलकुलेट किया कि डस्टबिन में कितने पेपर प्लेट्स है, एंड ही टोल्ड डस्टबिन में इतने पेपर प्लेट्स है, मतलब तुमने इतने वड़ा पाव भेजा है, इतना वड़ा पाव भेजा, मतलब 1 वड़ा पाव इंटू सो एंड सो प्राइस, दिस इज योर टर्नओवर, ऑन दिस बेसिस प्लीज पे इनकम टैक्स। और वो बंदा बोला है व्हाट ही टोल्ड, लेट मी टेल यू, दैट पर्सन टोल्ड सर दिस डस्टबिन व्हाटएवर पेपर प्लेट्स आर देयर, ये सुबह से है, ये शाम का नहीं है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ऑफिसर तो नाटक मत कर बेटा, हमने ऑलरेडी कैमरा इंस्टॉल कर दिया वहां पे, सुबह का कचरा ऑलरेडी आफ्टरनून में उठा दिया है। दिस व्हाटएवर पेपर प्लेट्स आर देयर इन द डस्टबिन बिलोंग्स टू इवनिंग पेपर प्लेट्स ओनली। तो ऑफिसर ने कैलकुलेट किया इवनिंग इतना है मतलब सुबह कितना है, डेली इतना है मतलब मंथली कितना है, मंथली इतना है मतलब साल का कितना है, इतना टर्नओवर है मतलब कितना प्रॉफिट हो सकता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? दैट लेवल ऑफिसर्स कैन गो एंड कैच। आज भी वड़ा पाव सेंटर तो है ही वो, बट पेपर प्लेट देना बंद कर दिया वो आजकल साफ सफाई कर रहा है प्लेट्स का, समझ गए ना? आई मीन एक्सपीरियंस विल टीच नो ऑटोमेटिकली। So getting my point everybody? So all of us, now my point to you very clearly is that cheating वीटिंग तो ठीक है, but one fine day if he is caught, उस दिन खत्म कहानी। अब ये मत बोलो सर पक्का पकड़ा जाएगा, क्या पक्का नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। There is no rule that he will definitely be caught, there is no rule that he will definitely not be caught, but there is a high possibility, high probability that he will be caught. Friends, yes or no? Everybody? Exactly. So I'm again coming back to my same question. A West Indies person coming to India, making money in India, should he pay income tax in India? लीगली पूछ रहा हूं, लीगली बताओ, कॉट नहीं कॉट वो सब छोड़ दो, उसको भरना चाहिए या नहीं, इतना ही मेरा क्वेश्चन है। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल से यस? ठीक है, बाकी लोग नो। थोड़े लोग बोल रहे हैं सर हम तो वो भी है ये भी है, उसकी मर्जी है सर, उसको भरना है तो भरो, तो मत भरो। अरे हम लोग मर्जी की बात नहीं कर रहे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर यू शुड पे और यू शुड नॉट पे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिज फीलिंग्स एंड इमोशन। ऑलरेडी मैं आपको बताया कल फर्स्ट डे ऑफ द क्लास ओनली आई टोल्ड नो फीलिंग्स एंड इमोशंस, ओनली सेक्शंस एंड सबसेक्शन, सिंपल। लेट मी ऑनेस्टली टेल यू नाउ कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, शिवा तेजा इंडियन पर्सन, उसका आंसर मैं बोलूंगा, डोंट वरी, आई विल टेल। शिवा तेजा एन इंडियन पर्सन went to UK, made money in UK. Same principle, reverse story. Should I pay tax in UK? Speak out. आप इमोशनल मत हो जाओ, इमोशन लेके मत आओ प्लीज, नो इमोशंस, नो फीलिंग। अब मत बोलो सर आप हमारा आदमी है, नो इमोशंस। आप बोलो मुझे टैक्स पे करना नहीं करना है, बोलो यार। जब फर्स्ट वाला केस यस है, सेकंड वाला केस भी यस होना चाहिए। स्पीक आउट। बट द पॉइंट वी नोटेड हियर इज when an Indian person Shiva Teja
is going to UK, doing some activity in UK, making money in UK. UK fellow is telling, beta tu paise yahan pe kamaye, तेरे को यहाँ पे टैक्स पे करना ही पड़ेगा. Like that, who's telling? UK. But let me tell you, India also is telling me, Shiva Teja, pay tax in India. Because tu हमारा आदमी है, tu यहाँ का आदमी है. You getting my point? So speak out, my dear friends. That is the reason why there is first and fundamental, foremost important activity. What we do is to calculate something called residential status. Come on, what do we calculate, my dear friends? What do we calculate? Residential status. There is something called residential status, as per which we will find out whether this fellow is a resident or this fellow is a non-resident. For resident, the taxability is different. समझ में आ रहा है? For non-resident, the taxability is different. Now आप पूछेंगे सर बता दो सर, बता दो, आज ही बता दो कि कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट है, बोल दो सर. उतना आसान से नहीं होगा वो. There is some interesting concept which we have to understand, that if he stays in India for so and so number of days, then we call him resident. If he does not stay in India for so and so number of days, we will call him non-resident. और अलग अलग केस में अलग अलग डेज का कॉन्सेप्ट है. And this is your second chapter in your syllabus, where we'll understand who is a resident, who is a non-resident. If he is a resident, what will happen? If he is a non-resident, what will happen? You're getting my point? अब मैं last question पूछूंगा, I'll move to next point. That is, number one, West Indies player coming to India, making money in India. We all discussed that he has to pay tax in India. I am with you guys. That answer is a perfect answer. That is required to pay tax in India. No doubt about it. अब मुझे आप ये बात बोलो, West Indies player went to Australia, made money in Australia. Should he pay tax in India? Speak out. Speak out. Definitely answer is no. Indian person went to US, made money in US. Made money in? Should I pay tax in US? Definitely answer is yes. And India is telling pay tax in India also. Then how do we tackle that situation? We'll talk in detail in second chapter, residential status. Getting my point, everybody? तो सबसे पहले हमको एक आदमी का अगर टैक्स पे करना है, first we have to decide whether he is a resident or he is a non-resident. Because for resident, the tax treatment is different. For non-resident, the tax treatment is different. You're getting my point, everybody? So speak out, my dear friends. So सबसे पहले क्या करेंगे हम? Residential status. Once we identify residential status, we classify the income into 5 heads of income. Sir, I'm sure this thing you would have definitely not heard, for a simple reason, because you have been still doing only one activity called accounts. And we all know that accounting is an art of recording, classifying, summarizing. बराबर? और हमको तीन ही चीजें पता है. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses, credit all incomes. ये चीज सीखे ना सर अब. Whether in Maharashtra or you are in any state you are, this principle remains same. बस यही तीन principle apply करो और बोलो going concern, consistency, accrual. यार बोलो यार वही है ना. Exactly. This is what you will carry. Because accounting goes more on a principle based thing. That is why we call it as a double entry system. अगर आप दो गलती करते तभी भी बैलेंस शीट टैली होगा. एक डेबिट में करो, एक क्रेडिट में करो, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा. That is why we always say that balance sheet tallying doesn't mean answer is correct. ये डायलॉग तो बहुत बार सुने होंगे आप लोग. I don't know where you have taken your foundation coaching, but wherever you have taken, ये डायलॉग तो definitely accounts faculty को बोलना चाहिए. Because balance sheet tallying doesn't mean answer is correct. एक गलती डेबिट में करे, गलती क्रेडिट में करो, दोनों का अमाउंट अगर सेम है तो बेटा खत्म, बैलेंस शीट टैली. और हम लोग सीए का बच्चे हैं, एक बार अगर बैलेंस शीट टैली हो गया, दैट डे वी आर इन यूनिवर्स, किंग ऑफ द वर्ल्ड. करेक्ट? नो सर, इमेजिन करो बैलेंस शीट टैली का हैप्पीनेस क्या होता है सर. नेक्स्ट लेवल ही होता है उसका हैप्पीनेस. मैं जब सीए इंटर लिखा सर, फर्स्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम केम फॉर 20 मार्क्स, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. एक क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स, और मुझे का बैलेंस शीट टैली अभी भी याद है, 15,70,000. My balance sheet tallied. You would not even imagine, एक बार जब बैलेंस शीट टैली किया 1570, वो क्या रहे यार. अभी अकाउंट्स फर्स्ट पेपर है, बैलेंस शीट टैली हो गया, 15,70,000, दोनों जगह सेम फिगर आए, हो गया, आज बन गए एमसीए.
लिखे सीए इंटर का एग्जाम, वो भी फर्स्ट पेपर, और सीए का फीलिंग आ गया ऑटोमेटिकली बिकॉज बैलेंस शीट गॉट टैलीड। मैं एग्जाम सेंटर से बाहर आया, मेरा एक दोस्त का सेंटर भी ऊपर ही था, मतलब वही बिल्डिंग में था, वो बंदा ऊपर से नीचे आ रहा था। आई टोल्ड हिम, दोस्त बैलेंस शीट टैली हो गया। बोला अरे मेरा भी बैलेंस शीट टैली हो गया दोस्त। तो मैंने बोला अरे 15,70,000 बैलेंस शीट टैली हो गया। देन दैट फेलो टू 1570, मेरा तो 1590 है, मेरा भी बैलेंस शीट टैली हो गया ना। क्या हो रहा है ये, समझ गए ना? मतलब एग्जाम से बाहर मैंने तो ऐसा आया यार, हो गए सीए बस खत्म, बैलेंस शीट टैली, हमको कौन रोकने वाला है अभी। 1570 बैलेंस शीट टैलीड, हैप्पी। दैट फेलो केम एंड टोल्ड 1590 बैलेंस शीट टैलीड। अब टेंशन शुरू, क्या कर दिया एग्जाम में, क्या गड़बड़ हो गया। दोनों मिलकर एग्जाम के बैलेंस शीट टैली कर दिए, बिकॉज हमको नेक्स्ट एग्जाम के लिए 3 days ब्रेक था। वो टाइम पे देयर वर सम फेस्टिवल्स, सो वी गॉट 3 days हॉलिडे फॉर नेक्स्ट एग्जाम। जनरली करना नहीं चाहिए, जनरली एक बार एग्जाम लिख दिया तो काम खत्म, छोड़ो यार अभी क्या फर्क पड़ेगा अभी। सर एक बार अगर गर्लफ्रेंड एक्स हो गया तो आप नंबर याद है या नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, करेक्ट ना सर? सो इन द सेम वे एक बार अगर एग्जाम हो गया तो आप कुछ भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बट हम लोग क्या सोचे, ठीक है नेक्स्ट एग्जाम के लिए 3 दिन गैप है तो बाद में पढ़ लेंगे, एक 10 मिनट बैठ के हम दोनों सॉल्व करते ना दोस्त। तो उसको बिठा के हम दोनों मिलकर सॉल्व किया, हम दोनों को एक ही आंसर आया, 15,85,000 बैलेंस शीट टैलीड। पर दोनों भी खुश हो गए, मैं खुश हो गया, मेरा भी गया उसका भी गया, वो भी खुश हो गया उसका भी गया मेरा भी गया। आप ये सोचो, इफ बोथ ऑफ देम वुड हैव गॉट आंसर 1590 तो मेरा चेहरा तो छोटा हो जाता था, अगर 1570 आता तो हाँ उसका चेहरा छोटा हो गया। दोनों को 1585 आया, वो मेरे को देख के हंस रहा है, ये बोल रहा है कोई बात नहीं दोनों को गया। but still I got a score of 67 in accounts. The reason for that is because there is stepwise marking. No, ऐसा तो नहीं है ना कि बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ तो पूरा का पूरा गया, हमने पूरा बराबर किया, पर 2 एडजस्टमेंट गलत किया मैंने, और भाई साहब 1 एडजस्टमेंट गलत किया, मैं 2 एडजस्टमेंट गया, ठीक है कोई बात नहीं हो गया, बट पास तो हो गया ना, 67 आ गया, बस हो गया काम खत्म। बट एग्जाम के बाद तो खुशी से कर गए क्योंकि मेरा भी गया उसका भी गया। अगर 1590 टोटल आता था, आई एम श्योर आई वुड हैव डेफिनेटली फेल्ट सैड, नॉट दैट आई हैव गॉन, ही गॉट करेक्ट। इंडियन से ना यार वही प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, क्या होता है अगर हमका कुछ कम हो गया ना कोई बात नहीं, सामने वाले का ज्यादा है तो गड़बड़ होता है वो। अगर कोई सीए बच्चा किसी को फोन करके बोलता है यार मुझे तो 38 ही आ गए, मैं तो फेल हो गया, अगर उसने बोल दिया मुझे 32 आए, 32 आए मुझे 6 मार्क ज्यादा है, भैया दोनों फेल हो गए, ये चीज समझो पहले, करेक्ट यार, just come out of it. Anyways, so first point to be noted here is that why I told this point very clearly is that accounting is an art of recording, classifying, summarizing, where we are basically trying to draft your accounting by using accounting principle of nominal account, real account, personal account. You use your accounting principles, correct? Everybody? अब मुझे आप एक बात बोलो, अगर आपने कुछ asset बेच दिया, you will get some gain or loss. If you get a gain, will you credit it or debit it? अरे यार बोलो यार, आप फाउंडेशन हो गया यार, ऐसे बैठो मत यार। इफ यू गॉट अ गेन, विल यू क्रेडिट दैट गेन और डेबिट दैट गेन? क्रेडिट, बिकॉज इट्स एन इनकम। इफ यू गेट अ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, डेबिट बिकॉज इट इज ए लॉस। फ्रेंड्स करेक्ट है दोस्तों, बोलो। अगर गेन आया तो आप इनको इनकम बना देंगे, अगर लॉस आया तो आप उसको एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, सिंपल सी बात है। Now what I am trying to say is that in a taxation we follow a different concept altogether, where they told that आप income को ना 5 category में divide करो, but we don't call it as categories, we call it as 5 heads of income. What do we call it? 5 heads of income. Clear my dear friends? And what are the 5 heads of income? Please listen, don't write anything, just relax and listen. The first head of income is called income from salaries. ये सबसे बड़ा क्राइंग बेबी है दुनिया में। क्या बोला मैंने? सबसे बड़ा क्राइंग बेबी है ये, बिकॉज इसके पास ना टैक्स बचाने का ना कुछ ऑप्शन है ना कुछ बेनिफिट है, बिकॉज द बेनिफिट्स एंड एग्जम्पशंस व्हाट ही गॉट इज वेरी 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 लेस कंपेयर टू एनी अदर पीपल। दैट इज द रीजन व्हाई, सर आप एक्सपीरियंस करे होंगे, अगर कोई बंदा बोलता है मुझे जॉब मिल गया 1 लाख पर मंथ, सीधा एक क्वेश्चन आता है, पूरा काटने के बाद कितना आता है जेब में? होता है ना सर ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता है सीधा, पूरा कटिंग कट 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 पूरा कट होने के बाद कितना जेब में आ रहा है ये बोलो। मैंने कहा है 1 लाख रुपए, पर सब कट करके आने के बाद सिर्फ आएगा 60,000। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं,
So getting my point? Because all that whatever they deducted is technically called TDS, which is called as tax. Wonderful यार, beautiful. TDS का फुल फॉर्म क्या है? Tax deducted at source. आपके सिलेबस में एक चैप्टर भी है TDS, जो एग्जाम में 100% आता है, 4 मार्क मिनिमम, 100%, डाउट ही नहीं है. सर आई थिंक टुडे वी आर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इन आवर सिलेबस, करेक्ट? सो आपके सिलेबस में रेजिडेंस स्टेटस है. आपके सिलेबस में 5 हेड्स ऑफ इनकम भी है, एंड दैट 5 हेड्स ऑफ इनकम इज नॉट फुल्ली इन डिटेल, बट गुड लेवल ऑफ कंटेंट इज देयर इन सीए इंटर. जब फाइनल में आएंगे, वापस फाइनल में आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम है. आप ये मत सोचो कि अरे इंटर में हो गया ना, फिर क्यों आया. जो सेक्शंस इंटर में नहीं है, वो सेक्शंस फाइनल में है. नॉट ऑल सेक्शंस आर देयर इन इंटर. इफ एवरीथिंग इज इन इंटर, फाइनल में क्या करेंगे आप? इफ एवरीथिंग इज देयर इन इंटर, पास कैसे हुए हम? मोटिवेशन कहां से आए? सब मोटिवेशन तभी आएगा जब इंटर लेवल थोड़ा सा ज्यादा है फाउंडेशन से. पूरा का पूरा अलग ही है, तो कैसे करेंगे हम? कुछ तो लिमिट होना चाहिए ना. तो उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट का थोड़ा सा सेक्शंस आपके इंटर में लगाए और बाकी का सेक्शंस आपके फाइनल में है. बट गुड थिंग इज 5 हेड्स ऑफ इनकम के सिलेबस में सब में थोड़ा थोड़ा है. आपके महाराष्ट्र ताले जैसा है. वंडरफुल. सो गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी? स्पीक आउट. So first, what will determine? Residential status. Then we'll classify the income into how many heads of income? 5 heads of income. What is the first one? और जो एम्प्लॉयर जो सैलरी देता है वो क्या कट करके देता है? TDS. TDS का फुल फॉर्म क्या है बेटा? Tax deducted at source. So what is the first head of income? Salary. Second head of income, which is also very common, that is called house property. लोगों के पास होता है ना सर रेंटल इनकम. रेंटल इनकम पे टैक्स भरना है. गवर्नमेंट बोलता है भैया अगर इनकम है तो हम हैं आपके साथ, हम साथ है, कोई डाउट ही नहीं है. एंड लेट मी टेल यू वन पॉइंट. देयर वाज वन डॉक्टर. दिस डॉक्टर वाज डीलिंग इन ड्रग्स and he got an income of about 2.5 crores. One fine day, narcotics department caught him and told him, चल अंदर चल, डालते पहले अंदर. Before he was put in the jail, income tax officer came and told, पहले मेरा टैक्स भर दो, उसके बाद इसको अंदर लेके जाओ. They won case law also for this. So getting my point, everybody? That time, this fellow went to Supreme Court telling that this is illegal activity. How can you ask income tax? Then court gave a ruling, in income tax, there is no difference between legal income and illegal income. Income is an income. Wherever there is an income, income tax will follow. It doesn't matter how you got that income. अगर आप किडनैपिंग कर रहे हैं फिर भी इनकम टैक्स पे करो. अब ये मत बोलो सर गलत है ना सर. किडनैपिंग गलत है, इनकम टैक्स गलत नहीं है. इनकम टैक्स बोलता है आप जो भी एक्टिविटी करना है करो. चोरी कर रहे हैं कर बेटा, कोई बात नहीं, बट हमको टैक्स पे कर. पुलिस वाले देख लेंगे बाकी का काम, बट हमको तो टैक्स पे कर. You're getting my points, everybody? So what is the first head of income? Salaries. Third one, second one, house property. Third one is very interesting. ये बराबर समझ में नहीं आया तो बीपी बढ़ जाएगा. इसका नाम है PGBP, which stands for profits and gains from business or profession. What is that, sir? Profits and gains from business or profession. So whatever I'm telling you now are all the chapter names, which is all a part of your syllabus. Clear? What is the first head of income? Salary. Second one? Third one? PGBP. And let me tell you, Shiva Teja does not have first income, but Shiva Teja has got second income and third income. You're getting my point? Everybody, what is PGBP full form? Profits and gains from business or profession. Business में profession में फर्क क्या है? बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में क्या मिलता है? फीस. सैलरी. सैलरी मत बोलो यार, अरे हम एम्प्लॉय नहीं है यार. टू कॉल इट एज सैलरी देयर शुड बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. जब वो रिलेशनशिप नहीं है वो सैलरी में नहीं आता है. टू कॉल इट एज सैलरी देयर शुड बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. अच्छा क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? चलो बोलो, व्हाट इज फर्स्ट हेड ऑफ इनकम? सैलरी. सेकंड वन हाउस प्रॉपर्टी. थर्ड वन PGP. PGP फुल फॉर्म क्या है? Profits and gains from business or profession. Generally, Income Tax Act, they have given list of professionals who are covered in professional list. Legal, medical, engineering, architectural, technical consultancy, interior decoration, accountancy. They're all list of professionals who are covered in income tax. You're getting my point? Speak out.
Now I'll ask you one question, you think properly and tell. There is a person who does haircut, hair stylist, or a barber, whatever you call. Is it a skill and talent? Is it a skill and talent? Definitely it's a skill and talent. Is he a professional? Is he a professional? Bolo beta. No? You tell no, professional hairstylist. Is he professional? By nature, yes. But as per income tax, no. Because income tax, they clearly told who are the list of professionals. Next, I'll ask you one question. Carpenter, he has got skill and talent. Is he professional? Yes. By nature, yes. But as per income tax, answer is no. So, getting clarity? Everybody? Come on, what is section 27? 29? 231? 225A. India covers what? Territory, territorial waters, continental shelf or exclusive economic zone. Seabed and subsoil underlying such water. Airspace about territory and territorial waters. Exactly. Now, to decide whether a person has to pay income tax or not, what is the first thing we look at? Residential status. उसके बाद क्या देखते बेटा? Income, which is classified into how many heads of income? 5 heads of income. समझ में आ रहा है सर? So, जब भी कुछ डाउट है तो बिंदास पूछ लेना. Don't worry at all. Don't hesitate. Feel free to ask. What is the first head of income? Salary. Second one, house property. Third one. Fourth one is also very popular, very, very common especially. That is called capital gains. Capital? Capital gains means what? Gain on sale of an asset. Example? Land, building, machinery. सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं बोल रहे आप. कार तो ठीक है नहीं यार, क्या लैंड बिल्डिंग फर्नीचर में अटक गए. शेयर्स. एक्सीलेंट. कैसे बोल सकते हैं यार, शेयर्स को इतना बड़ा मार्केट बन गया आज की डेट में. हर बंदा जाके मन कर रहा है उसको शेयर्स में पैसे डालो, म्यूचुअल में पैसे डालो, कुछ ना कुछ पैसिव इनकम बनाओ. एंड कीप बाइंग सेलिंग. बुल, bear, whatever it is. So getting clarity everybody? So when you're buying and selling shares, that also will come under what? Capital gains. अगर वो बिजनेस एक्टिविटी है तो पीजीबीपी में जाएगा. सर हमको राकेश चुनने वाला पता है कहाँ पे बंदा अभी? एग्जैक्टली क्रॉस कर लिया ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर. एग्जैक्टली. Now the point is very clear that what is the source of income? Stock markets. Basically what he has done is he made investments. That investments got multiplied. He was the initial investor for what do you call Titan also, and he made a lot of money through shares. His net worth is close to more than 8,000 crores. Huge money he made in his life. Huge money he made. And that shares money what he made, he has done share trading activity as a course of his business. As a course of his, then where it will come? PGBP. So समझ में आ रहा है आपको? अगर एक सैलरीड बंदा है, उसने शेयर खरीद लिया, एक 10-15 शेयर, उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे थे, 10-15 शेयर खरीद लिया, एंड आफ्टर 1-2 years वो शेयर का प्राइस बढ़ गया, वो शेयर उन्हें बेच दिया. कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन्स. फर्क समझ में आ रहा ना सर? If you are doing that share activity as a course of your business, it will come under PGBP. If you are just doing that activity of buying, holding for some time and then selling when you get some profit, we come under capital gains. Getting clarity? So how many heads of income are there totally? 5. How many are done? What is the first one? Next. Fourth one. अब मुझे आप ये चीज बताओ कि आदमी ये 4 अंक के अलावा कैसे इनकम कमा सकता है? शिवा सर आपका कहां पे जाएगा? पीजीबीपी. एम्प्लॉय का कहां पे जाएगा? सैलरी. बेटिंग, गैमलिंग, लॉटरी. वंडरफुल, वेरी गुड आंसर. सर कौन बनेगा करोड़पति? देखे आप लोग कभी? कंप्यूटर महाशय. एग्जैक्टली. आप मुझे ये बात बोलो, अगर एक बंदा 1 करोड़ जीत लिया केबीसी में, उसको 1 करोड़ का चेक देते ना सब बड़ा, एक बार कैमरा ऑफ हो गया, वो चेक वापस लेते उससे और उसको देते 70 लाख का चेक. 30 लाख उधर ही कट गया. दैट इज कॉल्ड TDS. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. पर कैमरा में कितना दिखता है? 1 करोड़.
एक बंदा था जिसको 5 करोड़ आया था, पता है आपको? 1 person got 5 crores. टीवी पे 5 करोड़ दिखाया, फुल माहौल कर दिया, सब एक लेवल पे माहौल कर दिए, पर उसको हाथ में आए 3.5 करोड़. क्यों? टीडीएस गया 1.5 करोड़. यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? सो स्पीक आउट एवरीवन. गुड, फेयर इनफ. बेटिंग, गैमलिंग, लॉटरी, बराबर. और क्या इनकम हो सकता है आदमी के पास ये चारों के अलावा? गिफ्ट, एक्सीलेंट. कौन बनाए गिफ्ट? सही बात है यार, गिफ्ट भी आ सकता है. और गिफ्ट मतलब कोई चॉकलेट बिस्किट की बात नहीं करो यार, कोई कैश गिफ्ट दिया है अपने को, या कोई प्रॉपर्टी दिया है. प्रॉपर्टी तो अपने रिलेटिव देते, बट रिलेटिव के बाहर कोई दिया गिफ्ट हो सकते हैं ना यार. इमेजिन तो करो यार, आएगा गिफ्ट. अब यही बोल दे अरे कौन देगा सर, हमको कौन देगा, क्या मालूम कोई दिन आ गया, कोई देने वाले प्रॉपर्टी, बस 10 करोड़ प्रॉपर्टी कर दिया तुम्हारे नाम. तो बोल रहे मस्त लग रहा है सर, सुनने में मस्त लगता है, देता कोई नहीं पर. हाँ, और क्या हो सकता है? गिफ्ट इज अ गुड पॉइंट. नेक्स्ट सर, डोनेशन. सर हमको डोनेशन कौन देगा सर? आदमी को डोनेशन कौन देता है? वो ट्रस्ट को मिलता है ना डोनेशंस. तो इंसान को तो डोनेशन मिलता नहीं ना. डोनेशन हु विल गेट? ट्रस्ट विल गेट. Or if you take an example of temple, in that hundi people will put that donation. Donation is not an income as such. Donation is an income only for that trust. Only for that trust. हाँ, और क्या होता है? Wonderful. Somebody is telling provident fund में हमने इन्वेस्ट कर दिया, और कई और इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है. हमने कुछ फिक्स डिपॉजिट कर दिया, एफडी करते ना सर, एफडी बहुत लोग, एफडी पे इंटरेस्ट आता है ना सर. अब मुझे बोलो ये इंटरेस्ट सैलरी इनकम है क्या? बोलो यार. इज इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम? इज इंटरेस्ट बिजनेस इनकम? अगर उसका बंदे का काम ही है लोन दो लोन दो लोन दो लोन दो, तो पीजी पे जाएगा, नहीं तो उसमें तो जाएगा नहीं ना. इज इट ए कैपिटल गेन? नो. तो लास्ट एक ऑप्शन है, क्या है वो बोलूंगा मैं. और क्या इनकम हो सकता है? सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट. गुड, सबको आता है यहाँ पे थोड़ा 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 थोड़ा. सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट मुझे भी आता है. हाँ, नेक्स्ट. और क्या हो सकता है? बोलो बेटा, और क्या इनकम हो सकता है? डिविडेंड, एक्सीलेंट, वंडरफुल आंसर यार, वेरी गुड. दैट्स वाज अ वेरी गुड आंसर. When you buy shares and sell the shares, it will come under capital gain or PGBP based on business activity or not a business activity. If it's a business activity, it will come under PGBP. Investment activity will come under capital gains. But on the shares, you get dividend. You get dividend. Will dividend come under salary, HP, PGBP, capital gains? No. Good, very good point. So all these types of income, what you told, will come under the last head of income called IFOS. जिसका full form है income from other sources. उन्होंने नाम ही लगा दिया income from other sources, where some incomes like gift, rightly said, some incomes like gift, some incomes like dividend, some incomes like interest, some incomes like betting, gambling and lottery are specifically taxable under other sources only. And if there is some income which is not covered under first 4 heads of income, cover it under IFOS. समझ में आया सर? और ये बोलो यार, if some activity is done which is not covered under first 4 heads of income, it is covered under income from IFOS. So getting clarity? I'll give a small example for this. Which kind of example can come into this? Sir, my cousin is there who is a salaried employee. He is basically working in some technology, tech related company with Microsoft. He has got a salary of about 3 lakh per month. 36 lakh per annum salary आता है उसको. उसके साथ साथ he also takes online classes only for one student. Only for one student at a time. Face to face class ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग करता है वो, एक ही बंदे को पढ़ाता है लाइव. समझ गए ना आप लोग? बट दिस इज नॉट अ रेगुलर एक्टिविटी फॉर हिम. साल में सिर्फ 2-3 बच्चों को पढ़ाते हैं. विल यू शो अंडर PGBP? वेयर विल यू शो? IFOS. सिंपल सी बात है. बिकॉज आई कांट शो अंडर PGBP. टू शो अंडर PGBP इट शुड बी ए रूटीन एक्टिविटी. पर्सन लाइक शिवा तेजा, हमारा तो काम ही है टीचिंग करो टीचिंग करो टीचिंग करो, सुबह से शाम तक यही काम है हमको, और क्या काम है? So getting my point everybody. And whatever CA practice I have got, that also will show under PGBP. रोज वही काम है, क्लाइंट से बात करो, क्लाइंट का सर्विस दो, काम करो. So getting my point everybody. That's it. Come on. What are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, income from other sources. Getting clarity everybody? All of us? Now listen to an interesting point.
when I combine all these 5 heads of income, we call it as gross total income. What do we call it? Gross total income. From gross total income, we take something called deductions. Chapter 6a. Deductions under chapter 6a. It is not number 6, it is Roman 6. In chapter 6a, we have got some deductions like 80C to 80U, 80C, 80D, 80E and all types of things are there. आपको एक एग्जाम्पल दूंगा मैं उसको समझने के लिए. सिंपल से एग्जाम्पल सर. फॉर एग्जाम्पल, Shiva Teja has got 50 lakhs income. Okay? Out of the 50 lakhs, I am paying 2 lakhs towards my life insurance premium. ये मैं किसी को दिया क्या? कुछ गाड़ी खरीदा क्या? कुछ प्रॉपर्टी लिया क्या? मैंने क्या किया? I paid life insurance premium. It's a basic thing only. What everybody wants to take life insurance because जिंदगी के साथ भी exactly. We always take life insurance policy. I paid some premium. Act is telling बेटा एक काम कर, तू 50 लाख पे टैक्स पे मत कर, जितना तू इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ना उसको माइनस करके बाकी पे टैक्स पे कर. Like that, they give some deductions. Which case deduction will come, which case deduction will not come, we'll talk in detail. We have got one separate chapter in our syllabus called deductions. You're getting my point, what I'm talking, sir? So in the last 20 minutes, what I'm teaching you is basically for you to understand अपने syllabus में है क्या? हम समझेंगे क्या next 50 दिन या next 2 महीने समझ में क्या समझने वाले हम लोग? अच्छा क्लियर है सर? डन. क्या पूछ रहे थे आप? LIC बोल के नहीं, LIC का भी है, मेडिकल इंश्योरेंस का भी है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का भी है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का भी है. वैसे अलग अलग सेक्शन का अलग अलग चीज़ों का अलग अलग सेक्शन में कवर्ड है, बट सब कुछ कवर नहीं है. अगर मैं बोलता 50 लाख मैंने कमा लिया, मेरे वाइफ को नेकलेस दिया 20 लाख का, 20 लाख माइनस करके मैं 30 लाख पे टैक्स पे करता हूँ, चलेगा क्या? गवर्नमेंट बोलता है मैं बोला क्या तुम्हारी बीवी के लिए गिफ्ट देने के लिए. समझ में आ रहा है लॉजिक? सो नॉट एवरीथिंग कैन बी टेकन एज डिडक्शन. गिफ्ट का एफर्ट उसमें आएगा, बट शी विल नॉट पे टैक्स बिकॉज शी इज माई वाइफ. आई मीन टू से गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जम्प्ट. गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जम्प्ट. अभी आपको डाउट आएगा ये रिलेटिव कौन है? वी विल लर्न व्हेन वी गो टू द चैप्टर कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. आपके सिलेबस में सैलरी का सिलेबस है, एचपी का एक चैप्टर है, पीजीबीपी का एक चैप्टर है, कैपिटल का एक चैप्टर है, आईएफओएस एक चैप्टर है. सर मेरे को 2 मिनट लगता है आपको बोलने के लिए आपके सिलेबस में ये है ये है ये है ये है, बट मजा नहीं आता है. अब जब ये ऐसे समझेंगे ना कि पूरा इनकम्स क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, देन यू विल अंडरस्टैंड. हाँ ये भी है ये भी है ये भी है, ये सब मिले तो ग्रॉस टोटल इनकम होता है. उसमें से हम डिडक्शन हम माइनस करेंगे, देन वी विल गेट टोटल इनकम. ऑन दिस टोटल इनकम वी विल पे टैक्स. So in your syllabus, you have got introduction chapter, which we are doing now. In your syllabus, you have got resident status chapter, which we'll learn soon. In your syllabus, you have got 5 heads of income. What are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. When we combine all 5 heads of income, what do we call it? Gross total income. From that, what do we take? Deductions given by chapter 6a. There is one separate chapter for you called deductions. Then what we get? Total income. On the total income we pay tax, and to pay the tax, I already told you that some rates are given in the Income Tax Act itself, but some rates are given by Finance Act. Today only I'll tell you the basic income tax rates for individual. We'll solve some questions also after some time. We'll take a small break after some time, then after that we'll do it. ठीक है ना सर? सर सीधा आपको बोल दूंगा सर ये लिमिट है ये लिमिट है ये लिमिट है, प्रॉब्लम सॉल्व करो. बकवास है वो, नॉनसेंस है वो. There should be some structured learning which has to happen. How it has to flow. Getting clarity, no? Directly you can't learn balance sheet. So मेरे ऑफिस में एक बंदा है इंटरव्यू के लिए, उसको पूछा, मैं एक एंट्री पूछा था सेल्स रिटर्न का, उसको बोला जनरल एंट्री पास कर, जनरल एंट्री बता इसका. वो बोलता है मुझे सर जनरल एंट्री तो मुझे आता नहीं है, आई नो हाउ टू प्रिपेयर लेजर्स. क्या पागल हो क्या, दिमाग खराब होगा तुम्हारा? लेजर कैसा आता है? पहले तो तुम एंट्री पास करो तभी तो लेजर बनता है ना यार. लेजर के पास तो टीबी आएगा, टीबी के बाद तो तुम्हारा पी एंड बैलेंस शीट बनेगा. You're getting my point? उसका फंडामेंटल से खराब है. अरे हाउ कैन somebody tell मुझे जनरल आता नहीं है लेजर आता है? इलॉजिकल है ना यार. सही आप जनरल बनाओ उसी से तो लेजर बनता है. अगर आप लेजर बना पा रहे तो ऑटोमेटिकली जनरल आपको आता है ना. हाउ कैन somebody say मुझे लेजर आता है जनरल नहीं आता है? That is completely illogical. So there should be some structured plan how it has to go. In the same way, that's how I want to tell you very clearly. So we calculate tax on what income?
total income. What is total income? Gross total income minus deductions. Under chapter, in chapter 6 we have got 80C, D, 80D, D, E, G, GG and all deductions are there. Clear my point? Different cases are there. For example, if I got 50 lakhs income, I donated 10 lakhs to BJP party or let's say Shiv Sena party. Law says, बेटा तूने बहुत नेक काम किया, 50 लाख पे 10 लाख माइनस कर, बाकी 40 लाख पे टैक्स पे कर. You're getting my point? Like this, there are deductions. In different cases, there are deduction, subject to certain conditions and restrictions. Any benefit, any deduction government is giving will definitely have some condition and restriction. बिना condition का कोई benefit आता नहीं. If something is coming as a benefit, it will definitely have some condition. So correct, sir? Everybody? Are we getting clarity on this point? Come on, guys. What are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGPP, capital gains, other sources. When we combine all 5 heads of income, what do we call it? Gross total income. From gross total income, what do we take? Deductions under chapter 6A. Once we reduce deduction, what do we get? Total income. Now we calculate tax on total income. Correct, sir? Up suno, sir. Imagine a case like this. Your total income is 22 lakhs 44,846. That is your total income. Law is telling, please round off this total income. 22 lakhs 44,000. क्या करेंगे? हाँ? 850. If it is 844, make it 840. 845, still make it 850. Which clearly says under section 288A, total income shall be rounded off to the nearest multiple of 10 rupees. Nearest multiple of what, sir? 10 rupees. And there is one more section called 288B. आप total income पे tax calculate करेंगे ना, sir? Speak out. The tax also shall be rounded off to nearest multiple of 10 rupees. Change रहेगा, रख लो आप. ज़्यादा है तो हमको दे दो. You're getting my point, everybody? 288A is what? Rounding off of total income. 288B is what? Rounding off of tax payable. 288A is what? Rounding off of total income. 288B is what? Rounding off of tax payable. Come on, what is 288A? Rounding off of total income. 288B, rounding off of tax payable. अब मुझे ये बात बताओ, do we round off gross total income? I clearly told, we'll round off only what income? And gross total income is before deduction. Total income is after deductions. Deductions are given by chapter. Exactly. So getting my point, everybody? So speak out your flow. समझ में आ रहा है ना सबको? Everybody clear with this point? So पहले हम क्या समझे, sir? Sir, I'll again give a small recap of what we have done. First we started democracy होता क्या इंडिया में, उसमें pillars क्या है. Then we understood what is tax, what is direct tax, what is indirect tax. Income tax is a part of direct tax. Income tax का क्या है structure? 5 चीजें हैं income tax में: act, rules, annual finance act, circular notification, judicial pronouncements. Correct, my dear friends? और हम ये भी समझ गए कि income earned in previous year is chargeable to tax and assessment year. And today we discuss very clearly that income tax applies to whole of India, including Jammu and Kashmir. India क्या है वो चीज भी समझ गए आज. बराबर, my dear friends? उसके बाद हम समझे किसको टैक्स पे करना पड़ेगा. सबसे पहले हम ये निकालते हैं उसका रेजिडेंट स्टेटस क्या है. First we have to find out what is his resident status. Then whatever income he got, divide that income into 5 heads of income and then take total. You get gross total income. From that you take deductions. Then we get total income. On the total income calculate tax. Then we will learn what are the tax rates. Pattern समझ में आ रहा है सबको? Everybody, my dear friends, एक बार अगर टैक्स रेट समझ गए ना सर, इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा with some small points. Then we'll move to which chapter? Residential status. Perfect. उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? 5 heads of income. There is no rule that first we have to learn salary only, then only we have to learn house property. ऐसा कुछ नहीं. All 5 heads of income are different heads of income. आप कोई भी order में पढ़ सकते हैं. I have my pattern. In that pattern we'll go. Okay, my dear friends? Everybody, sir, when I combine 5 heads of income, what do we call it? Gross total income. From that we take what? Deductions given by chapter. Then what we get? Total income. सबको समझ में आ रहा है ना सर बात?
एवरीबडी क्लियर विद दिस पॉइंट, ऑल ऑफ अस? सर एवरीबडी, बीच में एक छोटा सा काम करेंगे सर. What we do in small activity in this is, along with this, we also do one small activity called clubbing and set off and carry forward of losses. What is clubbing? We all know. I already gave an example. What is that? Shiva Teja ka chotu, my minor son earned some income. It is clubbed in the hands of whom? Father or mother, whose our income is higher. That is called clubbing. और मुझे ये बात बोलो, when my minor son income is clubbed in my hands, वो कौन सा रेट ऑफ इनकम में जाएगा? अगर सैलरी है तो सैलरी में जाएगा, एचपी है तो एचपी में जाएगा, पीजीपी है तो पीजीपी में जाएगा, कैपिटल है तो कैपिटल में जाएगा, अदर सोर्स अदर सोर्स में जाएगा. So getting my point? Everybody? What is that other word I wrote? Set off and carry forward of losses. What is the set off of loss? I'll give a small example. Listen carefully, sir. What is that example? Is something like this. One person is having salary income. Is having what income? Salary income. And is also having one house property. And in house property, there is no income, but there is a loss. आपको डाउट आ सकता है सर, लॉस कैसे हो सकता है सर? उसको रेंट आ रहा है साल का 5 लाख. साल का कितना रेंट है? 5 lakhs is the rental income what he is getting. But that property he purchased by taking a loan, and for that loan he is paying interest of 6 lakhs. Is that interest related to that house? So related to that house, what is the income he is getting? 5 lakhs. अरे बोलो यार, related to that house, what is the income he is getting? 5 lakhs. What is the interest he is paying? नेट क्या बचा उसके पास? -1 लाख. उल्टा लॉस हो रहा है ना उसको. गवर्नमेंट बोल रहा है बेटा रो मत, हम है ना तेरे साथ. 1 लाख लॉस हो गया ना, तेरे पास सैलरी इनकम है ना, उसके साथ तू सेट ऑफ कर. उसके साथ तू क्या कर? सेट ऑफ कर. अगर आप बोलेंगे मेरे पास सैलरी इनकम भी नहीं है, कुछ भी इनकम नहीं है, मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी, 1 लाख का लॉस है, रो मत, उसको कैरी फॉरवर्ड कर. अगले साल कुछ इनकम आएगा ना, तब सेट ऑफ कर लेना. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. इन योर सिलेबस देयर इज वन चैप्टर कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम, देयर इज वन चैप्टर कॉल्ड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब एक्टिविटी हम करेंगे. इनकम कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, गवर्नमेंट को भरेंगे, सब करेंगे. बट गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा ना सर कि भैया मेरा नाम शिवा तेजा है, ये मेरा पैन है, मैंने इतना इनकम कमाया है, इतने लॉस हुआ है, ये देखो मेरा डिटेल्स. सबमिट तो करना पड़ेगा ना. कैसे सबमिट करेंगे? नो नो नो, आई टोल्ड यू देयर इज वन फॉर्म. व्हाट इज दैट फॉर्म? रिटर्न ऑफ इनकम. और कल बोला था मैंने, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ना सर. आपके सिलेबस में एक और चैप्टर है रिटर्न ऑफ इनकम. हो गया आपका सिलेबस. बीच में एक चैप्टर है टीडीएस एंड समथिंग कॉल्ड एडवांस टैक्स. बोला था ना सर आपको? सर अभी आप मुझे बोलो, जितना भी चैप्टर का नाम यहां पे मैंने लिखा है, ये सबके बारे में कुछ ना कुछ तो पता है अपने को. अरे बोलो यार. रेसिडेंशियल स्टेटस क्या पता है हमको? आज के डेट में हमको ये पता है बंदा रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है. अगर रेजिडेंट हो गया तो उसका टैक्स स्टेटमेंट अलग है, नॉन रेजिडेंट हो गया तो उसका टैक्स स्टेटमेंट अलग है. इतना तो पता है. क्या है कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग. और जो भी इनकम आता है उसको हम 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड करते हैं. क्या है 5 हेड्स ऑफ इनकम? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस. जब पूरा इनकम हम टोटल करेंगे उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. उसमें से गवर्नमेंट ने बोला भैया तेरे को थोड़ा डिडक्शंस देंगे, वो माइनस कर, फिर क्या होगा? टोटल इनकम. उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे. स्पीक आउट सर. बट टोटल इनकम निकालने से पहले अगर कुछ क्लबिंग सेट ऑफ करना है तो वो भी हम करेंगे, उसके बाद ही टोटल इनकम निकालेंगे. करेक्ट सर? उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे. अब मुझे बोलो, जब मैं टैक्स पे करूंगा, ऑलरेडी मेरा जो टीडीएस कट गया वो तो ऑलरेडी पे कर चुका मैंने. अरे बोलो यार. नाउ आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल सो दैट यू विल गेट अ फुल क्लैरिटी ऑन दिस वर्ड कॉल्ड टीडीएस. आपको पता है ऑलरेडी, थोड़ा बहुत आइडिया है, बट थोड़ा डिटेल में बोलूंगा मैं. सर लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई एम कमिंग फ्रॉम हैदराबाद टू पुणे. Let's say in Pune, I got 10 lakhs income. When expert is paying me 10 lakhs, expert academy is paying me 10 lakhs, they don't pay me 10 lakhs. Let me tell you honestly, they'll pay me only 9 lakhs. अबे पूछेंगे भैया सर 1 लाख कहाँ गया? उन्होंने लिया नहीं मेरा पैसा. 1 lakh they reduce as what? TDS, which they'll pay to government on my name. मेरे नाम से वो लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे. कैसा करेंगे वो सब बाद में देखेंगे यार. कैसा सब स्टोरी देखेंगे बाद में. बट बेसिक तो समझो पहले. 1 lakh they'll pay it
pay to government on my name. अब मुझे आप ये बात बोलो, can I say to the government 1 lakh TDS is already done, I will not pay any more income tax, my tax is done? Can I say that? Speak out. गवर्नमेंट बोलता है बेटा नाटक मत कर, पहले सुन मैं क्या बोल रहा हूं. 10 लाख पे कैलकुलेट व्हाट इज द टैक्स पेएबल, कैलकुलेट व्हाट इज द टैक्स पेएबल, रिड्यूस टीडीएस व्हाट इज ऑलरेडी डन. बैलेंस अगर कुछ पे करना है आपको, आप हमको पे कर दो. बैलेंस अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम आपको रिफंड दे देंगे. लॉजिक समझ में आया सर? सर ऑन 10 lakhs विल कैलकुलेट टैक्स. Assume that 10 lakhs tax is 1,10,000. How much TDS already gone? 1 lakh. Now what I should do? Balance 10,000 I have to pay from pocket to the government. Clear logic? Samjho, actual tax payable is only 90,000. How much TDS gone? I will claim what? 10,000 refund. भैया 90,000 1 लाख चले गया, 10,000 रिफंड दे पहले मुझे, और वो रिफंड देंगे हमको, इंटरेस्ट के साथ रिफंड देंगे. कितना इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है, बाद में पढ़ेंगे. सर डिड वी गॉट दिस फ्रेमवर्क? डिड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन आवर सिलेबस? और ये सब हम गवर्नमेंट को बताएंगे इन वन फॉर्म कॉल्ड ITR, व्हिच इज देयर एज अ पार्ट ऑफ चैप्टर कॉल्ड रिटर्न ऑफ इनकम. So these are all the topics which are there in your syllabus, on which we'll spend time for the next coming 2 months. Are we clear with this point, everybody? All of us, my dear friends? Everyone. And this all together is worth for about 60 marks, not 100 marks, 60 marks. 40 marks is your GST component. Don't worry. Are we clear with this? Your costing and law is all 100 marks. That's why they will take classes for you for 3 months. But हमारा क्या इनकम टैक्स के बाद जीएसटी भी पढ़ना है ना आपको? अरे बराबर ना यार, इनकम टैक्स 100 मार्क तो है नहीं, ये 60 मार्क के, वो 40 मार्क के, और लॉ कॉस्टिंग वगैरह तो 100 मार्क के. अच्छा क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? चलो लेट्स राइट 1-2 पॉइंट्स, देन विल टेक ए ब्रेक. चलो नीचे लिखो. प्रोसेस, हेडिंग लिखना, प्रोसेस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स. Process for payment of tax. Process for payment of tax. लिखो. Step 1. Step 1. Step 1. Determine. Step 1. Determine residential status. Determine residential status. Correct? No, that is the first step only, no? Everybody? Step 2. Step 2. Step 2. Income is ascertained. Income is ascertained. Ascertained. ASCRTAIN. Income is ascertained and classified. Income is ascertained and classified into 5 heads of income. Income is ascertained and classified into 5 heads of income. That is, what's that? Salaries, house property, salaries, house property, PGBP. बेटा PGBP का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. PGBP, कैपिटल गेन्स, capital gains, and income from what's there? Other sources. Yeah, please. You run from paying tax means? Okay. Same. Even income tax officer also required to pay income tax.
Even an income tax officer is required to pay income tax on income what he earns. Even government employees are taxable. But they have got some exemptions. Something like gratuity, pension. Some exemptions are there for government employee. But other thing remains the same. Yeah, क्या क्या लिखे बेटा? 5 heads of income. Salary, HP. Third वाला क्या है? Profits and gains from business or profession. Fourth one, capital gains. Fifth one, income from other sources. Correct, my dear friends? चलो बोलो. पे किया तो डिडक्ट होगा क्यों? There is one section called section 80GGB for donation by company to political party. 80GGC, donation by individual to political party. So one section in the Income Tax Act specifically says that if you donate to political party, whatever you donate, you can take deduction. So like that provisions are there. अब ये मत बोलो मैं डोनेशन किसी को भी कर दूंगा तो आएगा क्या? किसी को भी करेंगे तो नहीं आएगा. Specifically, deduction specifically gives that आप ये चीज करेंगे तो इतना बेनिफिट मिलेगा, ये करेंगे तो इतना बेनिफिट मिलेगा. चाइल्ड ट्रस्ट को दिया तो उसका अलग लिमिट से. थोड़े केस में 50% आता है, थोड़े केस में 100% आता है. किस केस में क्या परसेंट है तो पढ़ना पड़ेगा अपने को. उसमें जाके डिटेल में पढ़ते हैं अपन. पॉलिटिकल पार्टी को 100% दे दिया उन्होंने, ट्रस्ट को तो 50% दिए, पॉलिटिकल पार्टी को 100% दे दिया. क्या करेंगे इंडिया में भाई, कुछ ऑप्शन नहीं है. समझ गए ना? तो वहां पे जब जाएंगे ना डिडक्शन चैप्टर में, वहां पे पढ़ेंगे किस किस में क्या क्या डिडक्शन आते हैं, क्या क्या बेनिफिट आता है, कंडीशन क्या है उसका. क्लियर सर? आई एम जस्ट फॉर योर नॉलेज, लिखो मत है बट जस्ट समझो. दिस सैलरी चैप्टर is there from section 15 to section 21. House property is there from section 422 to 27. PGBP is there from 28 to 44. 45 to 55 is there in capital gains. 56 to 59 is other sources. 60 to 65 is clubbing of income. 70 to 79 is other sources. 70 to 79 is your set off and carry forward of losses. 80 onwards you have your deductions. Like that, there are sections what we are going to learn in every topic. And related exemption, deduction, condition, all that we learn in every chapter. Clear? अभी लिखो मत वो, जब वो चैप्टर में जाएंगे तब लिखेंगे. Clear? So step 1 क्या लिखे? Resident status. Step 2 क्या लिखे हम? Sorry. Heads of income. Step 3. All incomes together. और जरूरी नहीं है कि हर बंदे के पास 5 इनकम होना चाहिए. करेक्ट ना यार? अगर एक बंदा सिर्फ सैलरी इनकम है, दैट सैलरी इनकम ओनली विल बिकम ग्रॉस टोटल इनकम. फ्रेंड्स करेक्ट? ऑल इनकम्स टुगेदर इज नोन एज व्हाट सर? ग्रॉस टोटल इनकम. डन. स्टेप 4. Deductions under chapter 6A. 6A का स्पेलिंग देख लेना बेटा. It's not number 6, it is Roman 6 please. Deductions under chapter 6A. Deductions under chapter 6A is reduced from. Reduced है ना sir? Deduction under chapter 6A is reduced from gross total income. Deductions under chapter 6A is reduced from gross total income. Is reduced from gross total income. So getting clarity everybody? All of us? Deduction of chapter is reduced from gross total income. And the balance is known as, continue karo wape. And the balance is known as what sir? Total income. Done. कौन सा step हो गया बेटा? 4. चलो last step लिखेंगे. Step 5. Tax is calculated on such total income. Tax is calculated on such total income. That's it. सर ये तो क्लियर है पूरा? लॉजिक समझ में आ रहा है? फ्लो समझ में आ रहा है सर? प्रोसेस क्लियर है सर? एंड डोंट वरी गाइस सर. I mean, not about boosting ourselves, but let me honestly tell you, in my track record, there are hundreds and hundreds of people who have got exemption, and lot of people have done a lot. So, अपन तो यहाँ पे मस्त कर सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है.
So a lot of people have got some good scores. So definitely we'll do something amazing. And in group 1, group 2, जब भी आप पढ़ाई करें ना 2-3 सब्जेक्ट आपको definitely that should be your cream spot where more number of marks are coming. And I definitely want that to be tax. And that will happen. Automatically आप लोग इसको समझ में आ जाएंगे automatically. Because it's a lovely subject. You will enjoy a lot. Clear, my dear friends? And I'll put my best effort to ensure that we love this, we enjoy this, and we perfect this. लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला ही है. उसके लिए तो हम लोग, आप लोग हैं, हम लोग हैं. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी. चलो टेक ए शॉर्ट ब्रेक, देन विल गेट बैक. थैंक यू.
आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये सब चीज़ प्रैक्टिकली। अपने क्लास के बाद काम करो, तब मज़ा आएगा आपको। फिर क्या करें? जीनियस सॉफ्टवेयर, हाँ ठीक है, हम भी वो यूज़ करते हैं ऑफिस में, जीनियस। वो तो फिल इन द ब्लैंक्स है पूरा का पूरा, इंपोर्ट करो इंपोर्ट करो इंपोर्ट करो, करेक्ट ना? Yes, get back guys, come on. Friends, I hope we are clear with what we discussed so far, everybody. I think last 1 hour has been phenomenal in terms of understanding exactly how income tax system is working, अपने syllabus में है क्या और हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात, that is important, no? Sir, हम कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, वो क्या काम में आएगा आपको, that is what you have to understand very clearly. Sir, being a chartered accountants, I told you that हमारा तीन काम है, ये तो accounts, दूसरा audit, तीसरा tax. And a chartered accountant can never ever tell that he doesn't know tax, because tax is a core area what a chartered accountant work upon. तो टैक्स नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। Getting my point very clearly? So that is the reason why tax is being given so much of importance, and we need to understand the tax concepts very practically and understand them from the examination point of view also. Clear? How many heads of income are there? How many sources are there for income tax law? Wow. How many pillars are there in democracy? अरे क्या सब कुछ 555, ठीक है। What are the sources of income tax law? Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Annual Finance Act, then circulars and notification, judicial pronouncements. Correct, my dear friends? These are the 5 sources of income tax law. How many heads of income are there? What are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. What is PGBP full form? Profits and gains from business or profession. Profits and gains from business or profession. यहां तक क्लियर है सबको? 5 हेड्स ऑफ इनकम जब कंबाइन करते तो क्या इनकम आता है? ग्रॉस टोटल इनकम. टोटल इनकम बिल्कुल नहीं बोलना यार, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम. फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम व्हाट डू वी रिड्यूस? Deductions given by chapter 6 is number 6 or Roman 6? Exactly. Once we reduce deduction in chapter 6, what we get? Total income. On that we calculate tax. ठीक है ना सर? एक नोट वो भी लिखते हैं ना सर, वो 288A का 288B का कहानी क्या है? वो 288A 288B राउंडिंग ऑफ इनकम, राउंडिंग ऑफ टैक्स. राउंड ऑफ कैसा करे? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज. 288A बोलता है राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, 288B बोलता है राउंडिंग ऑफ डाउन. वन नोट बोल के लिख देना उसको. अभी अपन प्रोसेस लिखे ना, अभी ऑलरेडी स्टेप्स लिखे ना सर. एक नोट हम ये भी लिखते हैं, लिसन फर्स्ट लिसन नो देन विल राइट द 2 minutes. नोट हम पहला पॉइंट ये लिखेंगे, फ्रॉम द टैक्स पेएबल विल रिड्यूस द TDS. नेट इफ एनी पेएबल वी विल पे, इफ रिफंडेबल विल क्लेम रिफंड. ये चीज पढ़े ना हम लोग ऑलरेडी, समझ में आए ना सर? एग्जाम में ऑलरेडी दे दिया आपको. जब शिवा तेजा का 1 लाख TDS कट गया, कल के दिन मेरा टैक्स पेएबल 1,10,000 है, तो मैं बाकी 10,000 जेब से पे करूंगा. अगर एक्चुअल टैक्स मेरा 90,000 है, एक्स्ट्रा 10 जो मैं पे किया वो क्या करूंगा? रिफंड क्लेम करूंगा. क्लियर है ना बात? वो तो सबको क्लियर है वो बात? चलो बेटा पहले वो नोट लिखते हैं. फ्रॉम द टैक्स पेएबल, फ्रॉम द टैक्स पेएबल, फ्रॉम द टैक्स पेएबल एज पर, फ्रॉम द टैक्स पेएबल एज पर स्टेप नंबर क्या था? Step 5 only. Write down. From the tax payable as per step 5. From the tax payable as per step 5, comma, we will reduce TDS, comma, TCS. There is something called TCS. In some cases we'll talk about it. That is called tax collected at source. In some cases that TCS will apply, which we'll talk separately. TDS का मतलब tax deducted at source. TCS का मतलब tax collected at source. हम पढ़ेंगे क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग. चलो बेटा क्या लिखे हम? From the tax payable as per step 5, we will reduce TDS, TCS and advance tax paid
and advance tax paid, and advance tax paid, if any, and the balance will be, and the balance will be, and the balance will be, the balance will be net tax payable, and the balance will be net tax payable, balance will be net tax payable or refundable, and the balance will be net tax payable or refundable. I hope we understood the meaning of this word called refundable also. If TDS is more, tax payable is less, balance will take it as refund. Tax is more, TDS is less, balance will pay to government. ये सब काम कब करते पता है? When we file return of income. That is called ITR. How to file, what to file? In that chapter. What deductions will claim? In that chapter. 5 heads of income, how do we calculate? In that chapter. What is residential status? In that chapter. Which chapter? Residential status. Because this chapter, what we are learning is Introduction to Income Tax. That is the chapter name. Clear everybody? All of us? Can I proceed? Next note. Note 2 कर दो ना उसको. Note 1 लिखे ना पहली बात, अभी note 2 कर दो ना उसको. As per section 288A, as per section 288A, as per section 288A, come on, total income, as per section 288A, come on, total income shall be rounded off. As per section 288A, comma, total income shall be rounded off to nearest multiple of, total income shall be rounded off to nearest multiple of 10 rupees. Correct? Next line. As per section 288B, बेटा 288A किसके लिए? टोटल इनकम. 288B किसके लिए? राइट डाउन. As per section 288B, comma, tax payable, tax payable shall be rounded off, tax payable shall be rounded off, tax payable shall be rounded off to nearest multiple of, tax payable shall be rounded off to nearest multiple of 10 rupees. Tax payable shall be rounded off to nearest multiple of 10 rupees. That's it. Are we clear with this point, everybody? All of us, my dear friends? Pakka clear till now? Everybody? So what is section 27? Beta bolo, come on. What is section 27? 29? देखो मजाक मजाक में इतने सेक्शंस खत्म हो गए. That's why I told you we'll have fun along with subject, but will not make subject as fun. Difference is there. No, time pass subject के साथ साथ करना चाहिए, but subject के साथ ही time pass करेंगे तो हो गया. स्टार्टिंग मजा आता है एकदम, अरे क्या मजा आ रहा है, लास्ट में मालूम पड़ता है उसका मजा कहाँ तक है. Clear, my dear friends? Please, come on. Are we clear with this point, everybody? So what is section 27? What is section 4? बोलो बेटा, चार्जेबल सेक्शन क्या बोलता है? चार्जेबल सेक्शन क्या बोलता है? मैंने लिखा है आपको, देख के बोल दो, होना बोल दो, कोई बात नहीं. स्टार्टिंग है ना, कोई बात नहीं, देख के बताना. इनकम अर्न्ड बाय एन assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. वापस एक और बार. इनकम अर्न्ड बाय एन assessee during the previous year is chargeable to tax in the assessment year. Clear? As every assessee is a, but every person need not be an. So a person who is liable to pay tax, he will only become an assessee.
And SSC also includes person in respect of whom proceedings are taken up for assessment of his income. And SSC also covers somebody called deemed SSC, agent of non-resident. And SSC also covers SSC in default. भारत रत्न टाइटल बताए ना, एग्जाम्पल वड़ा पाव वाले को पकड़े, उसको बोले भैया 50 लाख पे कर, एक हफ्ता तेरे पास टाइम है, एक हफ्ते के बाद उसको टाइटल आ जाएगा. क्या है टाइटल का नाम? SSC in default. Are we clear with that? Everybody? How many heads of income are there? Deductions are given by which chapter? Number 6? Huh? Roman 6a. Does India cover subsoil underlying such water? Does India cover airspace above exclusive economic zone? Bolo. It covers only airspace above territory and territorial waters. Airspace above exclusive economic zone is not covered in the definition. What is covered is only airspace above territory and territorial waters. Territorial waters is up to, मैं ऑप्शंस बोलने वाला था, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 13, पहले आ गया आंसर आ गया. 1 nautical mile is equal to 1.853 kilometers. Correct? Income Tax Act which year? Income tax rules which year? Does person include local authority? Does person include company? Is every SSC a person? What is section 3? Previous year. Section 234? Wonderful, because I told you that 234 says previous year means previous year as defined in section 3. पता है ना sir? 288A, rounding off of total income. 288B, rounding off of tax payable. When we combine 5 heads of income, what do we get? From that, what do we take? Deductions given by chapter 6A. Clear, my dear friends? Everybody? All of us clear with this point? Chalo. Let me start now some important discussion. That is, just relax and listen. Please concentrate. I'm talking about something called tax rates for individual. Tax rates for what, sir? Individual. Please see very clearly. We'll divide them into 3 categories, boss. How many categories, sir? First category is called normal. Second category is called senior. Third category is called super senior. Normal, senior, super senior. Normal category age is 0 to 59. 0 to? Can a 0 years boy also make money? Possible. He just 1 month old. एकदम क्यूट है बंदा. इसको बोले चलो इसको ऐड में लेते या इसको करते माहिष्मती. देखिए आप. हाँ वंडरफुल. बट वो तो वाटर बॉटल है वैसे, पूरा ग्राफिक्स है. वैसा हो नहीं था. कैसा हो गया सर मूवी में इधर से उधर पहाड़ को कैसा हो गया? How is it not possible to climb that mountain and jump that mountain? Movie is movie only. We have to see, enjoy and live it. Come on. 0 to what, sir? 59. Senior category is 60 to 79. Super senior 80 and above. जब तक है जान. अरे हो गया ना यार बात अभी. क्या बोलो? I mean, today's generation we all one fine day will come under senior category. Super senior तो भगवान जाने. For the kind of food what we are eating, cheese. जा रहे हैं ना सब जगह पे. हाँ. बहुत फर्क पड़ता है, right? So what are 3 categories? Normal, senior, super senior. Normal, what is the age criteria? Senior criteria? Super senior? 80 and above. And today we'll focus only on the tax rates for individual. बाकी सब हम कल बात करते हैं. Because today we'll understand this. I'll give you some questions which I want you to solve also. Clear everybody? Right. Normal category, what are the limits? Yesterday, I told you an important point that in India, direct taxes are progressive in nature. क्या मतलब है उसका? Higher the income, higher the tax. Lower the income, lower the tax. So getting clarity? Speak out everybody. Right. What they told is,
अप टू 2.5 lakhs नील. मतलब कोई बंदे का 2.5 लाख तक इनकम है, उसका टैक्स है क्या सर? जीरो. That is why this 2.5 lakhs we call it as basic exemption limit. What do we call it, friends? Basic exemption limit. बहुत कॉमन है. अगर किसी भी बंदे का इनकम 2 लाख से नीचे है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा. क्लियर फ्रेंड्स? इज दिस ग्रॉस और नेट प्रॉफिट? हाँ, टर्नओवर में प्रॉफिट में फर्क है. व्हाट इज टर्नओवर? टोटल सेल्स. व्हाट इज प्रॉफिट? Total sales minus all the expenses. Income tax we pay on what? Total income, nothing but your profit. You don't pay tax on turnover. In GST, you pay tax on turnover. Sir, in GST, we pay tax on what? Turnover. But income tax, we pay only on the profit or the income what we got. Net to figure what we got. For example, take an example. There is one sandwich person. His turnover is about, let's say, 30 lakhs in a year. What is turnover? 30 lakhs in a year. Expenses are 24 lakhs. Net profit is making, he'll pay income tax only on. But जब GST भरने गए तो 30 लाख पे GST आएगा. GST ग्रॉस पे, नेट पे थोड़ी है. इससे तो कस्टमर से कलेक्ट करते हैं पूरा GST. There's something called shifting of tax burden. सुनिए ये वर्ड. डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या है? इम्पैक्ट एंड I'm happy. बस वही वर्ड चाहिए था. अब मैं डर गया. अभी कौन बोलेंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डेंजर वर्ड है वो. व्हाट इज द वर्ड? इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन सेम पर्सन. Indirect tax is the tax where impact and incidence is on different person. So getting clarity? Chalo, up to 2.5 lakhs, what is the answer? Nil. 2.5 to 5 lakhs at the rate of 5%. 2.5 to 5 lakhs is what rate, sir? 5%. In your material, I think one place by mistake, it was wrongly printed as 10%. Usko ignore kar do. Whatever I'm writing here, this is the final thing. Clear, friends? सब जगह बराबर है, but एक जगह प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ. मैं कल चेक किया था उसको. So ignore that and just see this. Okay, my dear friends. So up to 2.5 lakhs, what is the rate? 2.5 lakhs, 5%. 2.5 lakhs, what is the rate? Nil. 2.5 to 5 lakhs, 5%. Next, 5 lakh to 10 lakh, 10%. Good. 20%. सीधा 5 से 20% वाट लगेगा. About 30 lakhs, about 10 lakhs. Sorry? 60%. अरे मारेंगे क्या आदमी को? मरवाएंगे क्या उसको? वो बोलेगा भैया मैं इनकम ही नहीं कमाऊंगा, गवर्नमेंट की क्या नौकरी करूंगा अभी. मैडम का लॉजिक में समझ गया. मैडम बोले 5 से 20 हो गया तो 4 गुना बढ़ गया. अभी 20 से कम 3 गुना तो बढ़ा दो. About 10 lakhs is straight away, my dear friends, 30%. तो बेसिकली कौन ज्यादा सफर करता है इस बीच में? जो 5 से 10 लाख बीच में उसको लगती है. सो गेटिंग माई पॉइंट. अभी इसको छोड़ो. 5 minutes विल कम बैक हियर अगेन. अभी मुझे बोलो सर, 1% मिस्टर एक्स करके कोई बंदा है. ही इज एज्ड अबाउट 45 years. विच कैटेगरी विल कम? नॉर्मल कैटेगरी. वेरी गुड. हिज इनकम इज 7 lakh rupees. इनकम इज कितना सर? कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 20%. 7 lakh 20% is how much? 1,40,000. So getting clarity? 7 lakh 20% is how much, sir? 1 lakh. That is his tax payable. अगर एग्जाम में आंसर लिखेंगे 0 marks देख के बोलेंगे फिर आ जाना बेटा, फिर एग्जाम फीस लिखना. Because in India we follow a system of progressive based taxation, and whatever rates we wrote there are called as slab rates. What do we call them? When I say 7 lakhs, law is telling up to 2.5 lakhs. Tax is what, sir? Nil. बेटा 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना है बेटा? अब मुझे बोलो 2.5 लाख के 5 लाख में बीच में कितना है? Sir, in 2.5 lakhs to 5 lakhs, how much is the amount? 2.5 lakhs. In 2.5 lakhs to 5 lakhs, how much is the amount? 2.5 lakhs. On 2.5 lakhs, what rate? 5%. Which comes to 12,500. समझ में आ रहा सर? स्पीक आउट. नेक्स्ट स्लैब क्या है? 5 लाख टू 10 लाख. कितना रेट है बेटा? 20%. बोलो बच्चों बराबर है.
5 लाख टू 10 लाख कितना है 20%. बट इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूं 5 lakhs to 7 lakhs. 10 लाख तो ही नहीं है तो मैं लिखूं क्यों 10 लाख बराबर इंटू व्हाट रेट. आप मुझे बोलो 5 लाख टू 7 लाख कितना अमाउंट है. कोई तो 30,000 बोला है भैया. 2 लाख का 20% क्या होता है बेटा 2 lakhs 20% is how much sir 40,000. What is my total tax payable 62,500. सीधा आप बोलेंगे 7 लाख का 20% 1,40,000 नॉनसेंस हो जाएगा वो. That's ridiculous. Sorry, not even 62, it is 52,000. You are right. 12,500 plus 40,000, how much is that? 52,500. So getting clarity? If you directly tell 7 lakh to 20%, 1,40,000, that is atrocious, nonsense, ridiculous. You have to calculate tax based on slab rates. What basis? Slab rate. Getting clarity everybody? Speak out. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. बोलो. अब आंसर बोलेंगे आप लोग. अब भी सोच के बोलना. इनकम इज 12 lakhs. एज इज 54 years. कैलकुलेट करो टैक्स. मैंने लिखने वाला हूं अभी आप कैलकुलेट करो. बुक में पेन में करना है तो पेन के साथ बुक में किधर तो रफ वर्क करो या तो सीधा कैलकुलेटर में करो आपकी मर्जी. अलग से मैं क्वेश्चन दूंगा 5-6 क्वेश्चन अभी. बट पहले ये तो ऐसे ही वर्किंग के लिए करो एक बार. सॉरी 1,72,000. अच्छा देखते हैं. अगर हम 12 लाख पे सीधा 30% करेंगे तो 3,60,000 जाएगा. दैट इज नॉनसेंस. समझ में आया ना आपको. आप सीधा 30% नहीं कर सकते ऐसा. वी हैव टू अप्लाई दैट रेट्स कॉल्ड स्लैब रेट्स. व्हाट डू वी कॉल देम? स्लैब. स्टेप बाय स्टेप रेट्स. स्लैब रेट्स. हो गया. वही आंसर है. चलो चेक तो कर लेते एक बार. बोलो दोस्तों अप टू 2.5 lakhs क्या है आंसर? नील. 2.5 to 5 lakh द रेट ऑफ ये हमेशा आएगा 12,500 बराबर ना यार. अभी 5 लाख के 10 लाख के बीच में कितना परसेंट है? 20% है. ये हो गया 1 लाख बराबर. ग्रेटर देन 10 lakhs द रेट ऑफ 30%. 2 लाख का 30% इज 60,000 विच कम्स टू 1,72,500. दैट्स इट. सबका सेम है आंसर एवरीबॉडी. क्वेश्चन मैं अलग से दूंगा आप टेंशन मत लो. यहां तक क्लियर है सब लोग? बोलो बेटा. नेक्स्ट. अभी जाते हैं पीछे. आगे नहीं पीछे. सो नॉर्मल कैटेगरी व्हाट इज द स्टोरी? 0 to 59 up to 2.5 lakhs nil. 2.5 to 5 lakhs 5%. 5 to 10 20%. About 10 30%. Are we clear with this? चलो देखो अभी सीनियर कैटेगरी. इसका क्या लगता है आपको? अप टू 5 lakhs. रॉन्ग आंसर. 3 lakh nil. बाकी सब कहानी सेम. सब कुछ सेम. समझ गए? सर्वे क्लियर? उसको सिर्फ 2,500 का फर्क पड़ता है. स्टूडेंट पूछ रहा है 2,500 कैसा है सर? अरे 2.5 लाख वहां पे 3 लाख यहाँ पे कितना फर्क है? 50,000. 50,000 का 5% कितना है? 2,500. तो अगर आपको 2,500 बेनिफिट चाहिए तो हमको सीनियर बनना पड़ता है. गेटिंग क्लैरिटी? नेक्स्ट व्हाट इज द लास्ट कैटेगरी? सुपर सीनियर. बोलो बेटा इसका क्या सीनियर? अप टू सीधा 5 लाख नील. गुड. राइट थॉट. अप टू 5 lakhs नील. नेक्स्ट 5 lakh to 10 lakh. Speak out. No, straight 20%. About 10 lakh. फर्क समझ में आया सर? नॉर्मल वाले को बोले 2.5 लाख तक नील. सीनियर वाले को बोले 3 लाख तक नील. सुपर सीनियर को कितना बोले? 5 लाख नील. बाकी सब कहानी खत्म सेम. 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20%. 10 लाख के ऊपर सीधा 30%. So getting clarity everybody? Speak out guys. What are 3 categories of individual? Normal, senior, super senior.
Normal, what is the answer? I mean, limits. Up to 2.5 lakhs, nil. 2.5 to 5 lakh, 5%. 5 lakh to 10 lakh, about 10 lakh. सुपर सीनियर, मैं क्या पूछा आपसे? सुपर सीनियर अप टू 5 लाख nil. प्रॉब्लम यही है, मैं बोलता हूँ ना, यही प्रॉब्लम है. हम वही बोलते हैं हम जो हमको बोलना चाहिए. हमको जो बोलने का वही बोलेंगे, सामने वाला जो सुनना चाह रहे हैं बस उसका कोई वैल्यू ही नहीं है. सीनियर up to exactly. Now what if a person is a male, same, female, some other category? Exactly, good answer, same only. Why I'm asking this question, you know, once upon a time prior to 2014, मतलब almost about 8-9 साल से पहले, there was a concept called for male limits are different, for female limits are different. Women empowerment. So they told for women limits are much more. You're getting my point? Once upon a time the concept was for men up to 1,80,000 nil, for women up to 2 lakhs nil. And finally we all became same. Happy, no? लड़के बोल रहे हैं अच्छा हो गया, फीमेल बोल रहे सर हमको डबल देना चाहिए था. क्यों मैडम, हमको भी डबल देना चाहिए. चलो एनीवेज, जोक से पार्ट. सर समझ में आया सब? क्लियर है? पक्का? अब मुझे बोलो, कल का जो वर्ड है प्रोग्रेसिव, ये लॉजिक समझ में आया अभी? जिसका इनकम ज्यादा है उसका टैक्स ज्यादा है, जिसका इनकम कम है उसका टैक्स कम है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. इफ अ पर्सन हैज गॉट इनकम ऑफ 15,000 per month, 1,80,000 per annum, no other income, what is the tax payable? Nil, that's it. Are we getting clarity? Now I'll tell some interesting point which I'll complete this area now. Listen carefully. Apart from normal tax, every person paying tax, should also pay health and education cess at the rate of 4% of tax. Come on, what he has to pay, sir? Every person paying tax, he should also pay something called health and education cess. It is as good as government is telling, भैया आप टैक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा आप 4% पे करो. किसके लिए? आप जो पैसा देंगे एक्स्ट्रा 4%, हम will use that for promoting health and promoting what? Education. Clear, my dear friends? That is why it is called health and education cess. The reason they call cess because if any tax is collected for a specific purpose, they call it as cess. Before in service tax there used to be Swachh Bharat cess, Krishi Kalyan cess, labor cess. For development of labor they are collecting that money. You are getting my point, everybody? Cess is always an amount collected for a specific purpose. They don't use the word tax, they use the word cess. Are we getting clarity on this point, everybody? दोस्तों बोलो, everybody? Clear, pakka? Done. So apart from tax, we'll also calculate what? Health and education is at what rate? 4%. कहानी खत्म नहीं हुआ. Mukesh Ambani is making a lot of money. Do you think he's happy? अरे यार चुप बैठ गया यार. अच्छा, मे बी मे नॉट बी डिपेंड. अच्छा ठीक है, पैसे से खुश है? इसमें भी मे बी है क्या? हाँ, पैसे से तो बहुत खुश है. मतलब आदमी के पास इतना बड़ा बिल्डिंग है, बंगलो है, मतलब एकदम फुल खुश है, शांत है. ना गवर्नमेंट बोल रहा है भैया तो ये सब पैसे कौन सी कंट्री की वजह से कमा रहे हैं? इंडिया. करेक्ट, नो? सिंस यू आर मेकिंग मनी इन इंडिया and you are making more money in India, please pay more tax. Please pay. Now don't bring emotions. Tell him that sir उसका खुद का मेहनत का फल है, उसका मेहनत है, एफर्ट है, जियो है, हमारा 4G है, फ्री है. वो सब emotions है. And I already told you no feelings and emotions. Only section and subsection. Very good. Dialogue याद हो गया आपको यार. ठीक है. So clear everybody? All of us? That extra thing what he is paying is called surcharge. Surcharge is only for those people who are making more money. When I say more money, what does that mean? Listen carefully. If total income is more than 50 lakhs,
but does not exceed 1 crore. Sir, I'm talking only about individual. Starting only, I told I'm talking only about individual. That too normal cases. Special cases we'll talk separately. We are talking about tax rates for individual. That too what case? Normal case. Special cases we'll talk separately tomorrow in detail. Don't worry. But we are talking now today only about normal cases. Are we clear with this point, everybody? Those bolo? Chalo. If total income is more than what? 50 lakhs, but does not exceed 1 crore, then surcharge rate is 10% of what? Tax. Extra bharna padega. So getting my point, everybody? So speak out. Now let me give a small example and I'll come back here. So let's say one person, Mr. A, his total income is 60 lakh. Age is 49 years. 49 years, which category? Normal category. Definitely once 49 years, he'll come at a normal category. Ab bolo beta, what is the answer? First, 2.5 lakhs, nil. 2.5 lakhs to 5 lakh, 5%, 12,500. क्या हर बार थोड़ी कैलकुलेट करेंगे यार, दिमाग में बैठ जाना चाहिए. 2.5 लाख से 5 लाख है, 2.5 लाख उसका 5% है, 12,500 हो गया ना यार. नेक्स्ट भी कैलकुलेट करेंगे क्या अभी आप लोग? 5 लाख टू 10 लाख 20%, 5 लाख का 20% होता है 1 लाख. स्टार्टिंग है ठीक है, बट हर बार कैलकुलेट की जरूरत नहीं पड़ेगा. देन अबाउट 10 lakhs, what rate? 30%. How much you have about 10 lakhs? 50 lakh into 30%. How much is that? 15 lakhs. Friends, I hope you are understanding. Just 1 second. Yeah. Total how much? 16 lakh 12,500. This is the basic tax. Yes or no? To this we'll add what? नहीं पहले हम ऐड करेंगे सरचार्ज. क्या रेट है बेटा? 10%. It is 10% because total income is more than 50 lakh but does not exceed 1 crore. More than 50 lakh but does not exceed 1 crore. I repeat again, more than 50 lakh but does not exceed 1 crore. Surcharge rate is 10%. कितना है 10%? 1,61,250. अरे ऊपर फिगर है ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा. आप टोटल बोलो बेटा. 17 lakhs 73,000. अब हम इसको ऐड करेंगे HEC at the rate of 4%. And let me tell you, 4% please calculate on 17 lakh 73,750. So now I'll tell you one point. Listen, एक second. Calculate छोड़ दो एक बार. Calculate छोड़ दो एक बार. सुनो. Surcharge is calculated on tax. Surcharge is calculated on tax. But HEC is calculated on tax plus surcharge. Getting clarity? And the surcharge story will start only if total income is more than 50 lakhs. If total income is 10 lakhs, still HEC will come. But surcharge will not come. HEC will always come. But surcharge will come only when total income crosses the limit. That limit is 50 lakh. समझ में आ रहा है सर? बोलो कितना है 4%? हाँ 70,950 डॉट आया क्या? ठीक है. टोटल 18,44,000. This is the total tax payable. और बेटा देख लो आप लोग, वो कमाए 60 लाख. How much money he made, sir? 60 lakh. I repeat again, how much money he made? 60 lakh. When he made 60 lakh money, he is paying a tax of what? 18,44,700. He made 16 lakhs and is paying tax of 18,44,700. So the 20 lakh तो गया वैसे ही. Approximately. Getting my point? अब ये मत आप ये बोलेंगे सर अगर पे नहीं करे तो क्या होगा? जिस दिन पकड़ा जाएगा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सब कुछ आएगा.
So getting my point, everybody? So speak out. Tomorrow I'll tell you one super duper point. जब भी अगर कोई बंदा टैक्स पे नहीं करता है और उसके घर पे फुल पैसे कैश गोल्ड सब कुछ है और इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रेड किया तो कुछ मिल जाता ना सर? उसका टैक्स रेट क्या है गेस करो. अभी आप जो बोले थोड़ी देर पहले, टैक्स रेट इज 60%, सरचार्ज 25%, सेस 4%, 78% तक जाएगा वो रेट, ऑलमोस्ट 80%. वो सिर्फ टैक्स है बेटा. अब ये मत बोलो 20% तो बाकी है ना सर. अभी वो टैक्स है, इंटरेस्ट अलग, पेनाल्टी अलग, जेल में अलग. सो गेटिंग माय पॉइंट. सो डोंट आस्क योर ब्रेन अगर पे नहीं करे तो क्या होगा. जो होने वाला होगा, पक्का भी होगा क्या? कभी ना कभी होगा. बिकॉज द लॉजिक इज सिंपल. इफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली. गेटिंग माय पॉइंट एवरीबडी? If not immediately, but definitely बहुत फर्क पड़ेगा यार. I mean, if you don't pay tax, one fine day you will be caught. When you're caught, the story is over. That day there is nothing to be left to be seen. All music only, full. बजेगा. Tax बजेगा. So getting my point, everybody? Speak out. Surcharge will calculate on which figure? Tax. HEC will calculate on? HEC will calculate on? Tax plus? Exactly. So getting clarity on this point, everybody? दोस्तों बोलो. So if total income is more than 50 lakh but does not exceed 1 crore, what is the tax? Speak out, what is the tax? Surcharge, I mean to say, 10%. And if total income is more than 1 crore but does not exceed 2 crores, 15%. Total income is greater than 2 crores but does not exceed 5 crores, 25%. स्टूडेंट बोल रहा है सब प्रोग्रेसिव क्या है, साफ नजर आ रहा है सर. क्लियर है ना यार? जैसा इनकम बढ़ते जा रहा है वैसे सब टैक्स बढ़ते जाएगा. गेटिंग क्लैरिटी? लास्ट पॉइंट. टोटल इनकम मोर देन 5 crores, सरचार्ज रेट इज 37%. क्या यार चेहरा बना दिया यार आप. वो चेहरा बना दिया रे यार. क्या करूँ क्या यार, इनकम ही नहीं चाहिए हमको, इतना ज़्यादा टैक्स ले रहा है गवर्नमेंट. बेटा एक बात आपको बोलूँ मैं, अभी टैक्स रेट हाईएस्ट क्या है बोलूँ? 30%. मोर देन 10 लाख है तो 30% ही टैक्स है ना. एक टाइम था तब टैक्स रेट टू बी 60-70% टैक्स. स्लोली दे हैव रिड्यूस ब्रॉट एंड स्टॉप्ड एट 30. अब आप बोले वो भी ज़्यादा है सर, 10 कर दो. हम लोग इंसान है यार, इंडियन से 10 के बाद बोलेंगे 5 कर दो. 5 क्या बोलेंगे? टैक्स क्यों पे करना तेरे को? बोल तो क्यों पे करना है? रोड पे तो प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम है, तो टैक्स क्यों पे करूं? इंडियंस है ना यार, कितना भी दो कुछ नहीं होते हम लोग. थाली में सब कुछ दिया है, मिठाई नहीं है तो पूछते ना यार भैया मिठाई खाए. सर करेक्ट है ना सर? अल्टीमेटली वी आर इंडियंस, वी वांट एवरीथिंग, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. ऑल ऑफ अस, यू आर नॉट यू नॉट मी, हम लोग सब ऐसे ही है, हमको सब कुछ चाहिए, नो डाउट अबाउट इट. अच्छा क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? समझ में आई बात? अब एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद ब्रेन ऑफ हो जाएगा 2 मिनट. देखो हमें सर, लेट्स से फॉर एग्जांपल one person, Mr. A, age is 45 years, fully sharp man, his total income 6 crores. मस्त लग रहा है ना सर सुनने में? कितना करोड़ है? अभी देखो और मस्त लगेगा. बोलो बेटा. अप टू 2.5 lakhs नील. अभी वापस कैलकुलेट नहीं करना है, बराबर बोलना आप लोग. 12,000 कितना होगा? ये तो दिमाग में बैठ गया ना अभी. ये तो फटाफट आ जाना चाहिए. फर्स्ट और सेकंड के लिए कैलकुलेटर यूज नहीं करने की जरूरत नहीं है. अब ब्रेन शुड एक्सेप्ट इट. क्लियर नो? चलो अबाउट 10 lakhs कितना है? 5 crore 90 lakhs. सर 5 crore 90 lakh की हो गया ना? अरे बेटा बोलो बेटा. अभी बताओ आप मुझे 5 crore 90 lakh का कितना आता है? 17 crore सा. मैडम आप ज्यादा पढ़ लिए, थोड़ा एक नंबर कम कर देना प्लीज. 1 crore
77, हाँ 6 करोड़ के इनकम के लिए 17 करोड़ टैक्स पे करेंगे। आप सही इनकम टैक्स ऑफिसर है आप, ठीक है ना? डन नो? चलो टोटल क्या है बेटा बोलो? 1 करोड़ 78 लाख 12,500। बच्चा बोल रहे क्या सर 6 करोड़ में 2 करोड़ तक जा रहा है? बेटा पिक्चर अभी, हाँ देखा अभी। एड वॉट, क्या रेट है? 37%। किस पे करोगे? 6 करोड़ पे करेंगे क्या? हाँ प्लीज। हाँ 65 lakhs 620। अब टोटल बोलो। 2 करोड़ 44 lakhs। क्या इतना उदास होकर क्यों बोल रहा है यार? तेरा टैक्स थोड़ी है यार, बोलना खुशी से। 2 करोड़ 44 lakhs 3,000। अभी पहले मैं जब फिगर पूछा वो बोला 1 करोड़ 77 lakhs। अब टोटल बोल तो 2 करोड़ 44 लाख। अरे तू क्या बिल हो रहा है इतना यार? 2 करोड़ 44 लाख 3,125। हाँ अभी और क्या आएगा बेटा? बच्चा बोल रहा है रुक जाओ सर, सबर करो, रुकने का नहीं। चलो बोलो अभी 4%। 9 लाख। बोलो अभी टोटल 2 करोड़। आया कितना बेटा? 6 करोड़। टैक्स गया कितना? ऑलमोस्ट 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ समझ के चलो। तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट तक जा रहा है? ऑलमोस्ट 40% के ऊपर जा रहा है टैक्स। 42% के आसपास जा रहा है टैक्स। मजाक नहीं है यार। ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ यू आर पेइंग टैक्स। यू आर सो हैप्पी। 6 करोड़। इनकम टैक्स ऑफिसर आया बाजू में से, 6 नहीं है बेटा, 3.5 करोड़। 2.5 करोड़ मेरा है। सर कदम ना सर। सर getting my point everybody? Are you clear with this point everyone? Can we solve any question? Sure? Pakka? Done. Now my point is very clear my dear friends, that which you have to understand very clearly, that is this whatever rates I gave is all the basic tax rates. Special cases we have got special concept जो अब बाद में पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है? आज जो भी पढ़ा मैं आपको नॉर्मल टैक्स रेट से। क्लियर? स्पेशल रेट्स आर देयर विच विल टॉक सेपरेटली। एवरीबॉडी क्लियर? चलो पुट साइड हेडिंग नॉर्मल टैक्स रेट्स फॉर एन इंडिविजुअल। Please put side heading normal tax rates for an individual. Normal tax rates for an individual. Sir ये ले लेना सर, just write this part, just that part you write. Normal tax rates for an individual.
नीचे का एग्जाम्पल मत लिखो, सिर्फ टैक्स रेट से लिखना वहां पे, ठीक है. एग्जैक्ट 60 years will come under which category? Senior. Exact 80, 84, 64, 54, 24, 29, 79. वेरी गुड सर, क्लियर है यहाँ तक? चलो लिख दिया, हो गया. और नीचे लिखना एवरी, नीचे लिखो नोट, every person paying tax, every person paying tax should also pay, every person paying tax should also pay, every person paying tax should also pay, should also pay health and education cess. Every person paying tax should also pay health and education cess at what, sir? 4% of tax plus surcharge, if any. You got my point? Of tax plus surcharge, bracket right, if any. Tax plus surcharge, bracket right, if any. मतलब सरचार्ज आएगा नहीं आएगा नहीं बोल सकते, बट HE से तो आएगा ना कंपलसरी. अब मैं एक बात पूछूंगा सर आपसे, बोलो मुझे, 1 person income is only 2 lakh per annum, there is no other income, should he pay tax? Should he pay tax? Should he pay health and education cess? Speak out. HEC will come only when there is a tax. Surcharge may come, may not come. Clear? Next note. High income group people, individuals, high income individuals, high income individuals, high income individuals are also required to pay, high income individuals are also required to pay, high income individuals are also required to pay surcharge over and above normal tax, surcharge over and above normal tax. Surcharge over and above normal tax. Below right rates of surcharge. Put side heading rates of surcharge. So whatever I taught you today is all normal cases. Special cases is different, which we'll talk separately tomorrow. Okay? Next class we'll talk in detail about special cases. Normal case you write. Take that. This part you write down. Rates of surcharge. Is that done? Everybody? Chalo, I'll give some questions. Please calculate tax. Sir, in income tax, we don't use the word calculation of tax. We use the word computation of tax. Sune ye word, madam? What do we call it? Computation of tax. We don't call it as calculation of tax. We call it as computation of tax. That's why we say computation of total income, computation of tax payable, computation of income from salary,
computation of income from house property, computation of income from PGBP, computation of income from capital gains, computation of income from, पूरा मिला के बोलेंगे gross total income. Then take deductions under chapter 6a. Then balance what we get. On the total income we'll calculate tax payable. Getting clarity? Chalo. In the following cases, right question, come on. In the following cases, come on, compute tax payable. In the following cases, come on, compute tax payable. Tax what, sir? Payable. Number 1. 4 or 5 cases I'll give. Okay? First case. Mr. A, age 32. Mr. A, age 32. Come on, guys. What did I say? Mr. A. What is the age? Age 32. Income is 9,90,000. What is the income, sir? Second question. Mr. B, aged 64. Age what, sir? 64. Income is 74 lakhs. 74 lakhs. Mr. C, aged 83. Mr. C, age what, sir? 83. Income is 2 crore. Mr. D, aged 51. Income is 12,25,000. 12,25,000. That's it. 4 questions. Get me the answer. 5 minutes time I'll give you. Do it. You have to solve like this only. Don't calculate in the calculator. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे सॉल्व करोगे आप. प्लीज. आपको एग्जाम लेना है क्या? ये एग्जाम लिखना है क्या? अगर लिखना है तो लिखिए, वरना ये पैटर्न में सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन. ठीक है ना? पैटर्न तो समझ में आया ना? हाँ, तो ये पैटर्न में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस पैटर्न. सीधा कैलकुलेटर में करके मत बताओ मुझे. इन एग्जाम यू कांट शो योर कैलकुलेटर टू द एग्जामिनर. यू हैव टू प्रेजेंट. तो सीधा दिखाओ. अप टू 2.5 लाख इतना, 2.5 to 5 लाख इतना, 5 लाख to 10 लाख इतना, अबाउट 10 लाख इतना, सरचार्ज कितना, सेस कितना, बराबर से लिखो. करो बेटा करो प्लीज. टाइम पास मत करना प्लीज. ना दोस्त बोलो ना.
नहीं. सिर्फ आज के लिए किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो यू कैन यूज कैलकुलेशन योर फोन, बट ओनली फॉर टुडे प्लीज. ये एक बार फोन ओपन करेंगे ना, प्रॉब्लम क्या है उसमें, व्हाट्सएप इंस्टा सब चालू हो जाते हैं. डिजिटल वर्ल्ड एक हिसाब से अच्छा है, बट वन वे इट्स वेरी बैड ऑल्सो, सो बी केयरफुल. सिर्फ आज के लिए यूज कर लो. Think properly and do it. Wherever surcharge is applicable, apply that surcharge. And cess is of course applicable at all places. फर्स्ट वाला हो गया. क्या है फर्स्ट वाले का आंसर? वन लाख 14,920. एवरीबडी सेम आंसर. ठीक है. 9,90,000 I told, no? ये कितना फिगर है? 98,000. हाँ टोटल
HEC 1,14,000. Everybody same answer? Excellent, good. सेकंड क्वेश्चन क्या दिया मैंने? In 64 income 75 lakhs ना? 64 है तो क्या करेंगे बेटा? अप टू 3 लाख नील. 3 लाख टू 5 लाख 5% कितना आएगा? 10,000. 5 lakh to 10 lakh 20%. 1 lakh. About 10 lakh 30% is 64 lakhs into 30%. How much is it? 19 lakh. Total figure 20 lakhs. We will add surcharge. क्या रेट है बेटा? 10%, which is 2 lakh 3,000. 22 lakh 33,000. HEC 4% कितना होगा? 89,000. That's it. What is the final figure? 23, 22, 320. How many of you got same answer? Good. Almost majority. But few of them didn't raise hand. Please check where you have done the mistake. Check कर लेना बेटा एक बार. कुछ डाउट है तो पूछ भी लेना. थर्ड क्वेश्चन क्या दिया मैंने? एज 83, इनकम 2 करोड़. ठीक है. वन करोड़ 90 लाख का 30% कितना है बेटा? सॉरी, टोटल सरचार्ज क्या रेट अप्लाई करेंगे आप? स्पीक आउट. 15%. More than 50 lakh does not exceed 1 crore, 10%. More than 1 crore does not exceed 2 crore, 15%. More than 2 does not exceed 5, 25%. More than 5 crore, 37%. बराबर ना यार दोस्त? तो कितना परसेंट आएगा? 15% आएगा ना? कितना है 58 का 15%? सॉरी, $66 lakhs 70,000. Come on, HEC 4% कितना है तो बेटा? 2,66,000. टोटल 69 lakhs. That's it. आर वी क्लियर? चलो शायद और एक क्वेश्चन भी दिया ना मैंने. क्या बोला मैंने लास्ट क्वेश्चन? एज 51. इनकम क्या लीजिए बेटा?
12 लाख, क्या करने वाले? 2.5 lakhs nil, 2.5 lakh to 5 lakh, 5 lakh to 10 lakh, 20%, कितना होगा? ग्रेटर देन 10 लाख 30%, ग्रेटर देन 10 लाख कितना है? 2,25,000, उसका 30% कितना होगा? 67,000, टोटल 1,80,000, करेक्ट नो फ्रेंड्स? कितना हो रहा है? 1,87,000, that's it. Sir, I hope you are clear with this concept, everybody. I think we can calculate tax for any question what you get in the exam. Speak out. And 100% कुछ ना कुछ question आएगा ही आएगा where they'll ask you to calculate tax. You're getting my point, no? Sir, yesterday class was more of an introduction where we just understood what is tax all about. But today's class is very, 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 very important class because we spoke a lot about how the entire process of income tax system work. How resident status, then how to apply the stepwise, what are the 5 heads of income, lot of interesting things we covered today, which will be there with us for next coming 2 months. The same stories will come into picture again. Are we getting clarity, everybody? Speak out. One last point for today. With that, we'll close here. Listen carefully, sir. Sir, one person, Mr. A hai. Okay, guys? He is resident in India. India का ही बंदा है. He is born here, brought up here, never went out of India. Pakka, he'll be resident only. Friends, getting clarity? But if you stay in India for so and so number of days, we call him resident. Second chapter we'll learn soon. There we'll talk about who is a resident, who is a non-resident. In detail we'll talk there. Clear everyone? दोस्तों, right. इसका income है boss 4,40,000. Okay? लिखो मत कुछ, मुझे बताओ टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 4.4 लाख, 5%. बताओ. $9,000. Total is 9,500. Correct? What do we add to this? What do we add to this? But they gave an interesting concept in the law known as rebate under section 87A. Which section? Which says, now listen to the concept. I'll make you right, but listen. Rebate under 87A is applicable only for resident individual. Only for resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs. अब ये मत पूछो सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं दिया आप? You're getting my logic, no? Rebate concept is applicable only for whom, sir? Resident individual. That too for those whose total income does not exceed 5 lakhs. And the amount of rebate is tax payable or 12,500, whichever is lower. What is the rebate here? 9,000. Net tax will become nil. You're getting my point, everybody? Speak out. All of us. एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था एक बार 4,40,000. बच्चा ने लिखा 9,500, रिबेट 12,500, रिफंड 3,000. समझ गए ना? Will rebate be 12,500? कितना आएगा रिबेट? 9,500 only. You're getting my logic, everybody? चलो कंडीशंस क्या है रिबेट आने के लिए? कंडीशन नंबर 1, it is only for resident individual. Condition number 2, whose total income does not exceed. Did I say gross total income? What did I say? उसका मतलब क्या है? After deduction, total income does not exceed 5 lakh. Then rebate is tax payable or 12,500, whichever is lower. अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आंसर बोलो. If one person income is exactly 5 lakh और कुछ भी इनकम नहीं है उसके पास, what is the tax payable? 12,500. 12,000. रिबेट कितना है? बोलो. 12,500. नेट टैक्स पेएबल 0. तो इनडायरेक्टली 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा उसको. यू गेटिंग माई पॉइंट?
But if one person income is 5,01,000, then he can't tell I want rebate. नहीं आएगा rebate तेरे को बेटा. Rebate किसको आएगा? जिसका इनकम 5 लाख तक है उसको ही रिबेट आएगा. और कितना रिबेट मिलेगा? जितना टैक्स है या 12,500, whichever is lower. अरे समझ में आ रहा है यार? बोलो भाई. अरे क्लियर एवरीबॉडी? स्पीक आउट. क्लियर एवरीबॉडी? कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा समझ गए ना? ये रिबेट क्यों दे रहे समझ गए ना? सरचार्ज क्यों पड़े आप लोग? जिसना इनकम ज्यादा है पकड़ो उसको, मारो उसको, लगाओ वाट, उसका ले लेंगे सरचार्ज. जिसका इनकम छोटा है बेचारा 5 लाख भी नहीं है उसको इनकम, कुछ तो बेनिफिट देंगे. करेक्ट ना सर? अगर एक बंदे का इनकम 5,01,000 है, ही कैन नॉट टेल 5 लाख से समझ के रिबेट दे दो ना. नहीं देंगे बेटा ऐसा. दिस रिबेट इज ओनली फॉर दोस whose total income does not exceed. That's it. Are we getting clarity? That's all for today. We'll write that one point and we'll close. Put side heading rebate under section 87A. सर अंडर सेक्शन को ऐसा लिखते हैं सर हम लोग U by S. उसका मतलब क्या है? अंडर सेक्शन. यू गॉट माई पॉइंट? रिबेट अंडर सेक्शन 87A. लिखो नीचे. Point number 1, condition number 1. This concept is applicable. This concept is applicable. This concept is applicable. This concept is applicable only for resident individuals. This concept is applicable only for resident individuals. This concept is applicable only for resident individuals. Condition number 2. Whose total income, आज के बाद सबको पता है ना टोटल इनकम का मतलब क्या है? अगर कोई बंदा आपसे चुपचाप बोलता है जीटीए टीए दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही नहीं होता है. जीटीए इज बिफोर डिडक्शन, टोटल इनकम इज, प्लीज गेट ए क्लैरिटी. चलो क्या लिखे आप लोग? whose total income does not exceed, total income does not exceed कितना सर? 5 lakhs. नीचे लिखो लास्ट पॉइंट. रिबेट इज इक्वल टू, रिबेट इज इक्वल टू टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल और क्या सर? 12,500. Tax payable or 12,500, whichever is lower. Tax payable or 12,500, whichever is lower. That's it. So clear with this everybody? That's all with this today's concept, and I'm sure you guys gained lot of knowledge today. Everybody, today's class I'm sure would have given some clear cut clarity. हम इनकम टैक्स में सीखने वाले क्या हो, पढ़ने वाले क्या हो, करने वाले क्या हो, वो तो समझ में आ गया ना आज? Everybody, how many heads of income are there? What are 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. When I combine 5 heads of income, what do I get? Gross total income. From that we take what? Deductions under chapter 6A. Then what we get? Total income. पर ये सब करने से पहले सबसे पहले हमको क्या चाहिए? Residential status. And last step क्या है? Total income will calculate tax payable. अगर TDS ज्यादा है तो refund लेंगे, TDS कम है तो बाकी pay करना पड़ेगा. Are we all clear with this point, everybody? Full clarity on this point, everyone. Pakka, my dear friends. And today we discussed only the normal tax rates for individual. Some special rates are there, which we'll talk in detail tomorrow. Are we getting clarity? Thank you so much. Take care, guys. See you tomorrow. Thank you. Any doubts? Please get back. अगर आप लोग ये ब्रेक में नहीं आ पा रहे तो लंच ब्रेक में आप लोग आ सकते चाहिए तो. आई विल बी इन द ऑफिस ऑन लंच ब्रेक आल्सो. ओके, कुछ भी है तो पूछ लेना बिंदास. डोंट हेजिटेट. फील फ्री, फील हैप्पी. थैंक यू.